Department of Biology and Society, Amsterdam University. So it's going to be a very, very interesting session, but in order to start with this session, I request each one of you to get inside. I can see a huge crowd at the entry gate. Entry point is flooded with the crowd. I request my security team to process the crowd as soon as possible, complete the security checks so that we can start with the session. Thank you. आज बहुत खास दिन है, मौका है बड़ा काम करने का। उन दिनों भारी बर्फ पड़ रही थी और यहाँ ठंड में रास्ते बंद। इसलिए हमारी बारी बाकी देश से 6 महीने पहले आई। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो खुशी, वो गर्व जो मैंने महसूस की। चाहे बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण जो विषय है कि वोटिंग के बारे में हम अवगत होना क्यों ज़रूरी है, ये भी आप इसके ऊपर पहले जो छात्र संसद यहाँ पे हुए उसके ऊपर भी ये चर्चा हुई। ब्लैक मनी इलेक्शंस के ऊपर भी इस 7वीं भारतीय छात्र संसद में चर्चा होने जा रही है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात, माय डियर स्टूडेंट लीडर्स ऑफ इंडिया, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमें जब तक हम अच्छे राजनेताओं की बात करते हैं, हम अच्छे वोटर कब बनेंगे? जब तक हम अच्छे वोटर नहीं बनेंगे और वो अवेयरनेस नहीं आएगा तो हम अच्छे नेता बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छे नेताओं से अच्छे नेताओं से आपको अगर शासन चाहिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अच्छा वोटर बनना हमने जरूरी, बहुत ही गुणी वोटर बनना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस अगर आप सब लोग जब तक नहीं करेंगे, मेरे जितने भी आए हुए छात्र संसद के जितने भी युवकों को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अवगत कराइए। इसका अवेयरनेस बहुत बड़ी संख्या में मतलब करना जरूरी है। जब तक अच्छा वोटर नहीं बनेगा और वोटिंग की एक वोट की कीमत हम नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता हम अच्छे नेताओं का अपेक्षा करना भारतीय छात्र संसद के इस प्लेटफॉर्म से भी सही होगा। तो मुझे लगता है वोटिंग इज अ बेसिस। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं कि प्लीज आप सीरियसली सोचें और वोटिंग के लिए बहुत
बढ़िया काम आपके माध्यम से होना चाहिए। आप सब लोग एक एम्बेसडर की तरह इतने बड़े नंबर से आके कितना बड़ा भारत में आप स्प्रेड होके ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 120 करोड़ की आबादी में आप 7-8 हजार बच्चे यहाँ पे जो इकट्ठा हुए, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके माध्यम से। इतना मैं अपील करता हूँ, प्लीज वर्क ऑन वोट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much. It was definitely indeed a very, very motivating film. Well, let me just ask you, have you all received the research project questionnaire? Please respond, yes or no. Have you received the questionnaire? Okay, it's a sincere request to all of you. It's a really, really important research project for all of us. You all are requested to read the questionnaire carefully. You can utilize this time till the time we start with this session. You can utilize this time and fill that questionnaire. And when you are going out of this pandal, at the exit points and the entry points as well, we have kept the drop boxes for these questionnaires. So please fill them up carefully, preserve them carefully with you, and put them back into the drop boxes which are there, made available at the exit points. You don't have to go individually to drop them in. If you have a group of 5-10 students, or your friends, one person can collect all 10 questionnaires, and he can go, or he or she can go and just drop it into the drop box. But make sure that your responses, your questionnaires, reach us properly. It is really important for us. It's a really important piece of research that we will be trying to build using your responses. Well, as I was sharing with you, tomorrow, that is on the last day, 19th of January, at 5:30 p.m. at the Plateau Hall, which is next to Saint Shri Dnyaneshwara Hall, Plateau Hall, which is next to Saint Shri Dnyaneshwara Hall. There you will be able to meet Professor Rahul P. Karat sir. If you want to meet him, no prior appointments are required. You can go there, share important piece of suggestions. Well, of course, we receive many such requests that we want to have selfie with sir, we would like to have a photograph with sir. Well, that is appreciated, but definitely the reason for which he would be sitting there to meet you is to understand your one-on-one opinions about Bharatiya Chhatra Sansad. Definitely selfie can become one part of it, but the important reason that you should go there and meet him is to give a direct feedback or any sort of suggestion about this particular platform, which is Bharatiya Chhatra Sansad. So please do remember, those who want to meet him, you can go there at 5:30 p.m. tomorrow and meet him without any prior appointments. You all are requested to visit the information stalls which are on this right-hand side of the pandal. I'm sure you make your entry and exit from this side of the pandal, so most of you may not have visited the stalls which are on this side of the pandal. So it's a sincere request to all of you that do make it a point that you visit all these stalls which are there for your information and take the advantage. We are all set to begin with this session, but let me just check if I have to still give you some important information. I have already shared with you yesterday that we have a special magazine for this particular platform, which is called Chhatrartha. It is the first and only magazine formulated for the youth and by the youth. We are expected students across the country, along with their renowned writers, to contribute for this special magazine. Bharatiya Chhatra Sansad is a unique and nationally significant 3-day annual conclave organized by Bharatiya Chhatra Sansad Foundation under the aegis of Myers MIT School of Government, Pune. In parallel to this seed thought, we have launched Chhatrartha, which is a monthly print magazine with the tagline of democracy, leadership, and governance. Our focus is to create the platform for socially and politically active students. Youth should be encouraged to enter the public life with the national spirit and with an abiding commitment for the motherland. We are sure that you will also join this movement and by encouraging this particular magazine through your articles and your opinions.
Well, I hope you all have visited the All India Radio stall. Have you? Have you visited All India Radio stall? Yes or no? Okay. I hope you will enjoy this session, which we are going to begin any moment now. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। और हमारे इस सत्र के हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ पंडाल में पहुँच गए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने स्थानों पर खड़े होकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सत्र के विशिष्ट मेहमानों का यहाँ पर हम स्वागत अभिनंदन करें। भारतीय छात्र संसद का ये 7वां अधिवेशन और ये दूसरा दिन, एक और फ्रूटफुल दिन और एक और सत्र जो कि और विचारों की गंगा को यहाँ बहाएगा। हम अपने विशिष्ट मेहमानों का यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हुए उनसे मंच पर आने का अनुरोध करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, अमिताभ त्रिपाठी जी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, डॉक्टर लॉबसांग सांगे जी, तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रधानमंत्री डॉक्टर लॉबसांग सांगे जी, फाखरी एच एल इसा, भारत में इराक के एम्बेसडर, मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी जी, सोशल रिफॉर्मर, डॉक्टर योस बंडर्स, डायरेक्टर एथना इंस्टीट्यूट फू यूनिवर्सिटी, और अनुराधा प्रभु देसाई, फाउंडर प्रेसिडेंट लक्ष्य फाउंडेशन हमारे बीच यहाँ मंच पर पधार रहे हैं और हमारे युवा छात्र नेता भी मंच उनके साथ साझा करेंगे। भारतीय छात्र संसद का ये 7 साल का सफर और इस मंच का निर्माण, युवा शक्ति को इकट्ठा करना, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए युवा छात्र नेताओं का हौसला बढ़ाना, कुछ ऐसा सिखाना, कुछ ऐसा मार्ग दिखाना कि देश के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए हमारी युवा शक्ति आगे आ सके। भारतीय छात्र संसद का यही मकसद है। भारतीय छात्र संसद के माध्यम से यूथ टू यूथ कनेक्ट प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिससे तमाम युवा एक दूसरे से जुड़ सकें और राष्ट्र निर्माण के काम को आगे बढ़ा सकें। वेबकास्ट के जरिए भी हमारा ये अधिवेशन पहुंच रहा है, देश भर की तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में देखा जा रहा है और प्रतिवर्ष हजारों छात्र देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ से भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर पहुंचते हैं, सुनने के लिए उन तमाम वक्ताओं को जो कि देश भर से यहाँ पर आते हैं, और युवा जो छात्र नेता हैं उनको सुनने के लिए भी। तो हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुँच गए हैं और हम इस सत्र की शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा जो ये सत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, रीपोजिशनिंग इंडिया अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वैश्विक परिदृश्य में किस प्रकार से भारत की रीपोजिशनिंग हो। हम जानते हैं कि जगत गुरु भारत कहलाता है, लेकिन किस प्रकार से हमारी ये यात्रा आज आगे बढ़ रही है, इसको जानने और समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मंच पर विराजमान अपने विशिष्ट मेहमानों का यहाँ हम स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूँगी भारतीय छात्र संसद के मुख्य संयोजक राहुल कराड़ जी और हमारे गवर्निंग काउंसिल के अन्य सदस्यों को कि हमारे विशिष्ट मेहमानों का यहाँ स्वागत अभिनंदन करें। हम अभिनंदन करेंगे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियों के बीच डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। हमारे बीच आज यहाँ पर अपने विचारों को साझा करेंगे इस विषय पर। हम अभिनंदन करते हैं आपकी तालियों के साथ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का। हम अभिनंदन करते हैं हमारे बीच अमिताभ त्रिपाठी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स, यहाँ मंच पर विराजमान। हम उनका भी यह स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारत की छवि विश्व में और उसको किस प्रकार से और बढ़ाया जाए, ब्रांड इंडिया को आगे किया जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, वाइस चांसलर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मंच पर मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे।
हमारी खुशकिस्मती है कि वाइस चांसलर देश की तमाम यूनिवर्सिटी से यहाँ आते हैं और अपनी बात रखते हैं स्टूडेंट्स के आगे। हम स्वागत अभिनंदन करेंगे तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रधानमंत्री डॉक्टर लॉब्सांग सांगे जी, और जो पहले भी भारतीय छात्र संसद में शिरकत कर चुके हैं जानते हैं कि डॉक्टर सांगे भारतीय छात्र संसद के साथ जुड़े रहे हैं वर्षों से, एडवाइजरी बोर्ड में भी शामिल हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सांगे का। हमारे बीच भारत में इराक के एम्बेसडर फाखरी एच अल इसा साहब मौजूद, उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अ वेरी वार्म वेलकम सर फाखरी एच एल इसा। आपकी तालियों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच डॉक्टर योस बंडर्स, डायरेक्टर एथना इंस्टीट्यूट फू यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं कि हमारे बीच एम्स्टर्डम से बहुत सारे युवा छात्र नेता आए हुए हैं और वहीं से ही डॉक्टर योस बंडर्स। आगे बढ़ेंगे हम, मुझे बताया गया मंच पर विराजमान नहीं है फिलहाल। हमारे बीच अनुराधा प्रभु देसाई, फाउंडर प्रेसिडेंट लक्ष्य फाउंडेशन, हमारे बीच यहाँ मौजूद अपनी बात आज रखेंगी, साझा करेंगी। उनका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। अनुराधा प्रभु देसाई। तो रीपोजिशनिंग इंडिया ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप जानते हैं कि कहा गया है भारत के बारे में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बल्कि समय के साथ साथ विश्व के पटल पर भारत और ब्रांड इंडिया आज चमक रहा है, दमक रहा है और सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया का कोई देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि विश्व के अग्रणी जो मुल्क हैं वो भी भारत को नकार नहीं सकते, उसकी ताकत के आगे उनको झुकना पड़ता है। और आज ब्रांड इंडिया किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, वैश्विक धरातल पर हम कहां आकर खड़े हुए हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आइए एक छोटी सी फिल्म देख लें और इस विषय को और गहराई से समझ लें। Repositioning India, a global perspective. With a consistent growth of around 7% over the past couple of years, the entire world is now witnessing the emergence of a new India. However, there is serious lack of a systematic effort to create a desired image for ourselves amongst the leading foreign academicians who influence the world thought. India is underrepresented in world academia compared to China, Islam, Middle East, and Japan. India's cultural diversity is a phenomenally untapped resource. Our various cultures attract the world to our doorstep and define our collective identity as a nation. Like the way Bhagavad Gita says, let a man lift himself by himself, for the self alone is the enemy of the self. We, as one country, shall have to invigorate our own national identity and pride to reposition ourselves. तो आज के विषय के बारे में ये छोटी सी फिल्म के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की आज के विषय को। और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, जो कि वाइस चांसलर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। वो आए, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं और आज के विषय पर अपने विचारों को हमसे साझा करें। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी। Good afternoon. My pranams to the dignitaries on the stage and the young minds in the audience. To set the ball rolling for this afternoon session on repositioning India, let me share a couple of my thoughts. If we want to reposition India, I think as youngsters, we must focus on three key areas. One is infrastructure, the other is good governance, and most importantly, innovations. I think that innovation should be given the top priority
if we want to reposition India in today's world. India has the capacity to build an ecosystem for innovation. In order to do this, we must master science and technology. With innovation, we should not just look at only the problems that the Indian society is facing. Rather, we should address even the global issues. Recently, when Bill Gates met our Prime Minister, Sri Narendra Modi, he said, the world is looking at India not to solve just India's problems, but to address the challenges faced by the world. But in order to do this, we must be very strong in science and technology. However, with recent technological innovations, technology pervading our lives at every moment, we have lost sight of the most important neutral values: love, compassion, and a sense of sharing. We have become too self-centered without realizing our role in the society. Certainly, we would not like to be remembered by our future generations as simply curiosity-driven, pleasure-seeking human animals. We must be socially aware while mastering science and technology, while innovating. Today, wealth making has become our primary focus. We have started idolizing profit-driven innovators as role models. But if you want to build an equitable and sustainable India, intrinsic passion and motivation and a sense of sharing our knowledge should be the core of the psychology of the young innovators. Innovations and scientific developments should not make us anxious, fearful, stressful. These innovations should lead us to live a very cooperative and peaceful life. But what are the areas in which we must innovate as Indians? The first thing that comes to my mind is the security. With tremendous technological developments taking place, very asymmetric and unpredictable threats are emerging to our national security. We need secure communications. We should be able to assess the risks. We should provide better border security, airport security, and so on. These are areas where, as youngsters, you must innovate. The second most important thing that we must look at is the health. India has already become the global center for many diseases. A large number of our poor people who live in rural areas do not have access to basic minimum medical facilities. This is where I think our youngsters have a lot of role to play in innovating the medical devices, medical procedures, and so on, so that the medical care becomes easily accessible and is also of low cost. Just to give you an example, 2 weeks ago, IIT Guwahati has announced that using nanoparticles and using just the thumb impression, a doctor can find if the patient has typhoid or not. These are the kind of innovations that we must look at. All over the world, the innovations in the health area have not been very successful because these innovations are not patient-centric. Their business models are to make profit. I think our Indian innovators must look at
the other human aspects of innovations in healthcare. The most important area where Indians should play a key role is in agriculture. How do you increase the agricultural production by using limited resources? How do you help our farmers to maintain soil health? How do you help them to better manage the water resources, which are very scarce? The biggest challenge India is facing today is higher education. In the next 10 years or so, we have to educate about 300 million Indians. We do not have the resources. So pedagogy is going to be another area where we need to innovate. How do you make education accessible and inclusive while working towards excellence? This is the biggest challenge that India has. Higher education, unfortunately, has become very elitist. We need to make it available to a large section of the society who are spread across the country. This is another area we need to look at. The last area where you need to innovate is the environment. So I said security, health, agriculture, pedagogy, and environment. SHAPE, shape. If you want to shape the future of India as youngsters, you must work in these areas and innovate. Let me conclude by recollecting what Mahatma Gandhi has said. Whatever you do in your life, it will become insignificant. But the most important point is to do it. Thank you. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, आपने अपने विचार रखे। और इस मंच पर हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, हम उन तमाम राजनीतिज्ञों का स्वागत अभिनंदन करते हैं जो युवा हैं लेकिन जो अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, विधायक हैं। आप जानते हैं देश में करीब 4000 विधायक जो हैं चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय छात्र संसद के मंच से हमारी कोशिश ऐसे युवा विधायकों को चयनित करने की होती है जो कि अपने इस काम को अपना मिशन बनाए हुए हैं, अपने ज़िंदगी का ध्येय बनाए हुए हैं और ऐसे चुनिंदा एमएलएज जो कि युवा विधायक हैं, सर्व कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको यहाँ स्वागत अभिनंदन करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से। और ऐसे ही एक विधायक जो कि सुर्खी सागर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं पारुल साहू, उन्हें आज यहाँ पर हम आमंत्रित करके आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर आपकी तालियों के साथ पारुल साहू, भारतीय जनता पार्टी की एमएलए सुर्खी सागर मध्य प्रदेश से, जिनकी कोशिश लगातार अपने लोगों की सेवा करना, उन लोगों की सेवा करना जो हाशिए पर पड़े हैं, हाशिए पर खड़े हैं। ऐसी पारुल साहू युवा विधायक, उनको आज यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करेंगे ऐसे एमएलएज का जिन्हें अभी एक लंबी पारी खेलनी है राजनीति की, उनकी अभी शुरुआत है और वो अभी से इस प्रकार के मिशन में जुटे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे इसी प्रकार से कार्य करती रहेंगी। पारुल साहू, आप संदेश देना चाहेंगी युवाओं को? Very good afternoon, one and all. It's a great honor for me to receive this award today. I would like to just one appeal to every single youth and leader present here, that today, if we get an opportunity as a youth, we should work on to strengthen the primary education in this country, because God has gifted every single seed with one talent or another. It is the duty of leaders and all youngsters to prepare the right soil for right future. Thank you. Thanks a lot.
बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे युवा विधायकों को देखकर ये लगता है कि वाकई हमारा देश सुरक्षित है इन युवाओं के हाथों में। और एक और नाम जिसे हम पुकारने वाले हैं, ऐसे ही आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए श्री वीटी बलराम, जो कि तीर्थला पलाकाड केरल से कांग्रेस के विधायक हैं। श्री वीटी बलराम, उन्हें आमंत्रित करते हैं आपकी तालियों के बीच आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए यहाँ मंच पर। आपकी तालियों से अगर गड़गड़ाहट मिलेगी तो युवा जो विधायक हैं उनका और मनोबल बढ़ेगा, उनका भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन श्री वीटी बलराम। आदर्श युवा विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एक युवा विधायक वीटी बलराम, अगर आप एक संदेश छोटा सा हमारे युवाओं के नाम दें। A very good afternoon to all of you, my young friends and comrades. I am very much happy to be here with you, receiving this prestigious Adarsh Yuva Vidhayak Award. I thank the organizers for having selecting me, and I take this not as a recognition for me personally, but it's a recognition and appreciation for thousands of young friends, young Indians like me and you, who would not sit back in their drawing rooms complaining about the system, rather would get into the system and try to change it from within. Here I can see people not only from Maharashtra, but from the different parts of this country. But I know that one thing that connects us is the feeling of being an Indian, being the proud citizens of the world's largest and perhaps the most vibrant democracy. Friends, our country is at crossroads. The whole notion of our nationhood is being challenged, not only from outside, perhaps even from inside. So we must take up that challenge to protect it, to protect the very idea of India, the idea of a liberal, a plural, a democratic, a socialist India. That has been the legacy handed over to us by the founding fathers of our republic, the great freedom fighters, the true patriots. We must take that mantle forward and make that dream a reality. Thank you all, and thank you one and all again for giving me this wonderful opportunity. Thank you all. थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल ठीक कहा, ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने से अच्छा है कि हम बाहर निकलें, उन समस्याओं से दो चार जिनसे हम होते हैं उनके लिए संघर्ष करें, अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच तो भारतीय छात्र संसद के मंच से हमने इन युवा जो विधायक हैं उनको पुरस्कृत किया। और हमें उम्मीद है कि भारतीय छात्र संसद के जो ये हमारे ऑडियंस सब बैठे हैं, युवा छात्र नेता, इनमें से भी कुछ भावी नेता कल निकलने वाले हैं। हो सकता है सम्मान होगा उनका भी भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर, और इसीलिए ये मंच बना भी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई हमारे दो युवा विधायकों की यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे हम। ये मंच कई ऐसे युवाओं को मौका देता है जो अपनी बात को रखना चाहते हैं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, उन विशिष्ट सम्मानित मेहमानों के सामने रखना चाहते हैं। और ऐसे ही युवा छात्र नेताओं को हम आमंत्रित करते हैं इस विशाल मंच पर कि वो साझा करें और अपनी बात को भी रखें। हमारे साथ आज के विषय पर बात करने के लिए स्टूडेंट लीडर जिनका चयन किया गया है आप सभी में से, पार्थ वेलनकर, महाराष्ट्र से जर्नलिज्म के स्टूडेंट, मायर्स MIT से पार्थ हमारे बीच अपनी बात को रखेंगे। Ladies and gentlemen, a very warm welcome to one and all present over here. Addressing a few group of journalists in the University of Michigan, Pujjaniya Swami Vivekananda had then said, 21st century is going to be India's century. Let us take a moment, ladies and gentlemen, to salute the great visionary leader. There was a time when in the Western academia, India was always underrepresented in comparison to other foreign establishments in the Asian region. However, now the entire world is witnessing the echoes of the Indian new leadership voice.
The tables have turned, ladies and gentlemen, now. You see, it is often said, time is the solution to every question. Even the Time magazine in its cover page has exhibited the phases of someone, of India being represented by someone who's called as an underachiever and other who's defined business, who means business. A global predominance, if to be palpable, it is indispensable to have a decisive leadership, ladies and gentlemen. It is indeed our leadership that is to be credited, as our engagements with the global superpowers like USA, Russia, China are based on stand-alone bilateral issues. And the crux is, it is happening without the conflicting our relationships with either of the nations or any other country. India shares a powerful ambition. This is not an occult space. As a matter of fact, Honorable Prime Minister Narendra Modi had openly spoken about this, about India's ambition to rise as a global and influential and responsible power. Amidst a global economic slowdown and a global bone of contention, India verily enjoys a much brighter spot, owing to the strategic conditions and the colossal market opportunities we have to offer to the globe. That is our power, ladies and gentlemen. India is a rising power in its own right, and a huge potential space for new businesses, right from espressos to express highways. Whichever nation manages to lure its New Delhi into its orbit tilts the favor in its scales. That is potential the world is now recognizing. You see, the 21st century politics is remarkably different from that of the previous centuries, as the global power axis today has shifted away. Famous English statesman Lord Palmer has said, nations does not have permanent friends or ally. Nations only have permanent interest. Under such a scenario, it is the exigent need of an hour that India preserves and projects its preserved soft power diplomacy to reap the eventual benefits of it. We have a lot of problems, be it domestical or at the international front. But this time, to our optimism, we have a very strong political will to fight and to transcend over it. My brothers and sisters, today I take this opportunity on the podium to comment one thing. We have successfully repositioned India in the global lab. And my friends, I'd like to conclude by saying, for India in the 21st century, the time has just begun. Thank you, ladies and gentlemen. तालियों के साथ धन्यवाद अदा करेंगे। पार्थ ने बहुत ही अच्छी अपनी बात को रखा, बहुत अच्छे तरीके से, और भारतीय छात्र संसद के मंच से हौसला अफजाई करेंगे पार्थ की आपकी तालियों के साथ। शुक्रिया। तो युवा छात्र नेताओं में अगले जिस वक्ता को हम बुला रहे हैं, शीर्षा माना वेस्ट बंगाल से बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं, अपनी बात को रखेंगी आज के विषय पर। Good afternoon, respected dignitaries present in the House, organizers, and my dear friends. Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by the narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, it's India. With 1.3 billion people and world's 7th largest economy, India is growing with enormous success in every sector. Recently, our Prime Minister inspired us for making Digital India, which is indeed a blessing for our country in this Google era to step up in a new dimension in the global context. But if everywhere there is growth and success, then why does the question of repositioning India arise? Why our unconscious mind cries, Bharat abar jagat sabai shrestha asana labe? India is deep-rooted in culture. Here, religion is our soul and philosophy is in our blood. But nowadays, we Indians are developing a very materialistic attitude by neglecting the moral and ethical aspects of life. Due to wastage, corruption, and lapse, most of our government projects remain unsucceeded. We are floating in corruption, terrorism, social inequality, illiteracy, and that's why demonetization has forcefully come today.
We have realized that this economic reform has brought a very positive impact in the society, but I think it is not enough. Now, we need educational reform too to bring back the glory of our country. We all are aware about the privatization of the educational system, which has become a boomerang to us in many cases. All the youths present here today will be agreeing with me that since childhood we have faced a very business-centric system of education which mostly produces degree holders with no morals and ethics. That's why it has broken the backbone of our country. We've forgotten the rich heritage of Vedas, Takshashilas, Nalandas. Today, those who have money, they have everything. And those who don't, they feel helpless, insecure, which indulges them into corruption and secondaries. If the government introduces insurance for all the Indian citizens, then it might help to reduce the internal turbulences. Well, it is high time for us to look behind our glorious Vedic era and follow them. In this context, I must pay regard to Baba Ramdev ji, who silently devoted himself to spread the Indian culture through yoga, which has led to India's betterment globally. Recently, UN has declared 21st June as International Yoga Day, which was possible due to the initiatives of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I hope that our country reveals with wonder soon. It is our duty, my friends, to work for Make in India and fulfill the dreams of our late President, respected Dr. APJ Abdul Kalam. Ishavasyam idam sarvam yat kinch jagatyam jagat. So let my country awake. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. बहुत खूब शीर्ष माना, आपने अपनी बात को रखा और यही हम सब चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और बुलंदियों को छू ले, और इसके लिए आप सब यहाँ पर आए हैं और इसी उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक द्विवेदी हमारे साथ हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं और एसओजी के स्टूडेंट हैं, मायाज MIT के स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के। अभिषेक द्विवेदी। मंच पर बैठे सभी महानुभावों को और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। आज 70 साल हो चुके हैं देश को आज़ादी मिले, 25 साल हो चुके हैं वैश्वीकरण और उदारीकरण स्वीकार किए हुए। आज भी हम एक निश्चित स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज अपने देश का बखान करते वक्त हम कहते हैं कि 125 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ भूखमरी है, अपराध है, यहाँ धर्म जात का भेद है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति बहुत नीचे गिर चुकी है। पर क्या सिर्फ ऐसा कहने मात्र से हमारे देश में सुधार होगा? क्या हम जहां पे पहुंचने की परिकल्पना कर रहे हैं, क्या हमारा देश ऐसा सिर्फ कहने मात्र से पहुंच पाएगा? दोस्तों, कप आधा खाली है या आधा भरा हुआ, ये इससे फर्क पड़ता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। आज से 120 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं देश को उगता हुआ देख पा रहा हूं। आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, बहुत ही गर्व महसूस होता है मुझे कि मेरे देश का भविष्य ये मेरे सामने बैठा हुआ है। आज भारत देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 0% से 7% तक हमारा विकास दर बढ़ चुका है। आज साक्षरता दर 70% के ऊपर है। दोस्तों, भारत ऐसा देश है जहां 1925 में पहली महिला नेत्री सरोजनी नायडू के रूप में मिली, वहीं अंग्रेजों को उसके 50 वर्ष बाद मिली। भारत प्रतिभा का सागर है। दोस्तों, सिलिकॉन वैली में हमारे प्रमुख बनकर वहां से लेकर नोबेल पुरस्कार पाने तक भारतीयों ने इसका प्रमाण दिया है। क्या इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद भारत को अपने प्रगतिशील होने का सबूत देने की जरूरत है? आज मुद्दा यह है कि हम अपने भारत को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम इसे कहां पहुंचाना चाहते हैं। वक्त आ गया है दोस्तों कि हम अपनी ताकत को पहचानें, हम अपने भारत देश की क्षमता को पहचानें और उस पर विश्वास दिखाएं। युवा शक्ति, भारत के राजनीतिक महत्व, भारत की संस्कृति, इन चीजों को हमें उजागर करके उसको अपनी ताकत बनानी है। आज जरूरत है भारत को विश्व शांति का प्रतीक बनने की। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धारेत आत्मान मनः नत्मनम अवसादयेत आत्माय भयात्मनो बंधुरत आत्माय रिपुरः मनः। इसका अर्थ यह है कि आपको उठाने वाला आपका ही अंतर्मन होता है और आपको गिराने वाला भी आपका ही अंतर्मन होता है। भारत की इस पावन भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। सभी ने ये सपना देखा कि हम भारत को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं।
आज मैं अपील करता हूं कि इस जिम्मेदारी को हमें उठाना है। आज ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अंत में अपने भाषण को विराम देते हुए ये कहूंगा दोस्तों कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरे सच्चे हैं तो घर में काबा काशी है। जय हिंद। बहुत बढ़िया अभिषेक द्विवेदी, आपने अपनी बात को रखा और इसीलिए हमने कहा था कि कुछ हस्ती ऐसी है जो मिटती नहीं है और भारत की हस्ती इसी प्रकार से बनी रहे, फले फूले। आप युवाओं के हाथों में वो है। अगले हमारे वक्ता आ रहे हैं शुभम बागड़े, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, एमए सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, पुणे यूनिवर्सिटी के। शुभम बागड़े। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया गिनती सीखी थी। तारों की भाषा सबसे पहले भारत ने सिखलाई थी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं शुभम वसुंधरा विजयेंद्र बागड़े अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। We have 5,000 year old civilization, 5,600 magazine, 22 languages, second English talking country. We are third in the army and also we are third in a number of doctors, scientists and engineers. अनपढ़ गवार और लाचार हम थे उनकी बातों में। अनपढ़ गवार और लाचार हम थे उनकी बातों में। आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है हमारे हाथों में। तो बात क्या हुई? हम विकास के मार्ग पर चल तो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान आत्महत्या से पीड़ित है। हम स्त्री को पूछते तो है वही, लेकिन दूसरी तरफ स्त्री भ्रूण हत्या और दहेज से हमारी माताएं जूझती है। दूध उत्पादन में हम सबसे आगे हैं, लेकिन तभी भी हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। भ्रष्टाचार के कारण इस देश ने एक कदम पीछे हटा है। हमें क्या करना होगा? हमें सभी युवाओं के अच्छे संगठन की निर्मित करनी होगी, जिसका एक ही वृद्ध होगा। पैसे की ताकत के सामने झुकाने वाले बहुत है, पैसे की ताकत के सामने झुकाने वाले बहुत है, लेकिन नहीं झुकते हैं हम, क्योंकि गर्व से युवा कहलाते हैं। भारत का यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 60 साल बाद भी हम स्वच्छता की ओर एक ही कदम बढ़े हैं, बल्कि ज्यादा स्वच्छता के कारण ज्यादा पर्यटन आने से हमारा ही विकास है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वी आर अपकमिंग कैपिटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हम मानव संसाधन में सबसे आगे हैं। हमें क्या करना होगा? हम मानव संसाधन से युवाओं का कौशल्य विकास करना होगा। और एक बात मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मिलने वाले लाखों करोड़ों हाथ हैं, मिलने वाले लाखों करोड़ों हाथ हैं, लेकिन साथ जब तुम जैसे युवाओं का हो तो क्या बात है। हम अपने आप को डेमोक्रेटिक तो बोलते हैं, लेकिन आज भी नक्सलवाद, जातिवाद, प्रांतवाद के जकड़न में देश है। हमें जनसंख्या में दूसरे नंबर का स्थान तो जरूर प्राप्त हुआ है, लेकिन ओलंपिक में नहीं। आज भी न्याय व्यवस्था में कई मुकदमे प्रलंबित है। हम सबका एक हिंदुस्तान है, हम सबके सपने एक है, उसे पाने का तरीका भी एक है। गीता, बाइबल और कुरान एक ही बात कहते हैं कि एकता में बल है और इससे आने वाला एक सुंदर कल है। इतिहास में भी हमारे पास सर्वोत्कृष्ट राज्य व्यवस्था थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित समाज और सुखी किसान थे। उसी चीज को आज दोहराने की जरूरत है। हाँ, मैं मेरे राजा की बात कर रहा हूं। ओम बोलने से मन को शांति मिलती है, ओम बोलने से मन को शांति मिलती है, राम बोलने से पाप से मुक्ति मिलती है, और जय शिवराय कहने से 100 शेरों की ताकत मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। Before leaving, I want to just say 2 lines about BCS and for whole scenario. Cashless is not the only option in front of a country. We have to try for other options also.
believe country is moving like a social political country. And for BCS, अंधेरे में जो रोशनी दे उसे दिया कहते हैं, अंधेरे में जो रोशनी दे उसे दिया कहते हैं, और भारत की प्रगल्भ होने में जो दिशा दिखाए उसे भारतीय छात्र संसद कहते हैं। वाह वाह वाह, जय बहुत हिंद। बढ़िया। शुभम बागड़े यहाँ पर सम्मानित करेंगे इस युवा नेता को जिसने अपनी बात को बहुत ही दमदार तरीके से रखा है, डॉक्टर सांगे के हाथों और राहुल कराड़ जी के हाथों। इस युवा का और हौसला हम बढ़ाएंगे। कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जमाने से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दुनिया को झुका देंगे भारत के इन कदमों पर, और हमारे युवा और युवा शक्ति जो यहाँ बैठी है उसके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा कर दिखाएगा हमारा युवा। ये बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है, पूरा का पूरा विश्वास है आप में। और अब I would like to invite a student leader from Germany, कलीना हीटर, जो कि यहाँ हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं वो आएं और हमारे युवाओं को यहाँ संबोधित करें। कलीना हीटर from Germany. Dear fellow students, I feel very honored to be here today. I'm overwhelmed by the kindness I received here in India in the last couple of days. My name is Kalina Heiter. I'm a German citizen and currently living and studying in Amsterdam, the Netherlands. As a child of 14 years old, I felt the urge to contribute to something that matters to those who are not as privileged as I am. Between my high school and my bachelor, I went to Uganda for voluntary work. I felt very lucky to become part of a group to work together in orphanages and with elderly people. I co-founded a community-based organization in Entebbe, Uganda, in which our main goal it is to create an environment in which people help people and in which the community supports those who can't care for themselves. Next to that, I worked as a teacher in schools where children were beaten up on a daily basis, and I had to change schools multiple times because I just could not bear it. But eventually, I found a school that treated the children with respect they deserved. In all of this, I encountered complex problems that I alone could not face. That made me realize that we needed the knowledge of all of us, of each of us together, to find a solution for those problems that we faced. This experience in Uganda made me the way I am today. This led me to Amsterdam to do a research master in global health. This master links with research methodologies that require a transdisciplinary way of working with each other, with people together. It takes into account complex problems being solved by actors from multiple backgrounds and by society. In March this year, I have the opportunity to go to Nepal to work on a research about social accountability mechanisms in maternal health services. But before that, I conducted a literature review about the same topic here in India. And I was so happy to see that there's the public hearings, one mechanism that is very well incorporated in the system. Those meetings require a strong representation from people of all sectors working together with the community. In the meantime, I'm the president of the UNICEF student team in Amsterdam. We as a team, we are trying to contribute to society, to give back to those who are not as fortunate as we are. You might think now, why is a girl telling you all of this in a session of global perspective? UNICEF
is a global brand and tries to unite people. But I think we cannot only unite in our own country. We can unite all around the world with our ideas and our knowledge. But we cannot do this only by listening. What we really need is to connect with each other. Dhanyawad. बहुत बहुत धन्यवाद कलीना हिटर, जर्मनी की युवा छात्र नेता। आपकी तालियों के साथ हम यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं इस युवा छात्रा का फ्रॉम जर्मनी, कलीना हिटर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो भारत को रीपोजिशन करने की बात, और आपको याद होगा 100 बरस पहले जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसे अब 100 साल होने जा रहे हैं, उस समय भी हमने एक औपनिवेशिक जो चंगुल था उससे हम बाहर आए थे। अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती दे दी थी भारत ने, और एक नए सूर्य का उदय, प्रकाश भारत में फैलना शुरू हो गया था। आज उस लम्हे को याद करना चाहते हैं एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से। बाद का ये जो पूरा एरा है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ये दोनों का चिंतन थोड़ा मन में आता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आज चंपारण की भी याद आती है। मुझे खुशी है इस बार 100 साल पूरे हो रहे हैं। Jesus. What the hell is going on? Some men change their times. One man changed the world for all time. My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me. 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. The story of one man whose voice spoke out for millions. To gain independence, we must prove worthy of it. हम वेस्टर्न जगत का खाली अंधानुकरण ना करें, तो यही मेरा मैसेज है अभी आप सभी युवकों को। और बापूजी को भी याद करिए, और किसानों के लिए काम करना हमारा दायित्व बनता है। किसान के क्षेत्र में काम करना, कि एग्रीकल्चर में काम करना और उसके ऊपर सोचना, ये हमारे सही में लक्ष्य होना चाहिए लाइफ में, कि वो कितने भी बड़े हम क्यों ना बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चंपारण के 100 बरस पूरे होने पर ये छोटा सा मैसेज और ये छोटी सी फिल्म, उम्मीद यही है, आशा यही है कि दिल में वो उमंग, वो जज्बा लेकर हम हमेशा चलते रहेंगे, ताकि भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचा सकें, एक नए रास्ते तक उसे पहुंचा सकें। और कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच यहाँ मंच पर विराजमान है एक और ऐसी शख्सियत जिनका ध्येय, जिनका लक्ष्य, जिनका मिशन उनके जीवन में यही है कि किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति की अलख को जगाया जाए। उन्होंने ऐसा भी एक एक्सपीडिशन किया जबकि वो लद्दाख गईं। करीब 450 सिविलियंस को लेकर वो लद्दाख पहुंची। किस लिए? अपने जो जाबाज सैनिक वहाँ हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं, और ख़ास तौर पर उनका मकसद ये है कि देश में इस देशभक्ति के जज्बे को जगाना। और हमारे साथ अनुराधा प्रभु देसाई, उन्हें आमंत्रित करूंगी, पर उससे पहले उनके जीवन और कार्यों पर ये छोटी सी फिल्म के माध्यम से आइए देखें उनका परिचय। Mrs. Anuradha Prabhudesai is a banker turned social activist and philanthropist. Mrs. Prabhudesai decided to live for a cause. She relinquished her job and started the Lakshya Foundation, whose aim is to establish a bridge of understanding between the Indian Army and the common people. Mrs. Prabhudesai opted for a voluntary retirement and is dedicating her life for the Lakshya Foundation. The primary objective of the Lakshya Foundation is to make the society become aware of the valor and sacrifice of our soldiers and their families, and make people think soldiers, dream soldiers, and breathe soldiers.
Soldiers give their today for the nation's safe tomorrow, says Mrs. Prabhudesai. The Lakshya Foundation brings common people and army soldiers together. The aim of the foundation is to spread the saga of sacrifice of the soldiers who died for their motherland. The Lakshya Foundation organizes visits to Ladakh for the civilians to make them become aware of the difficult conditions in which soldiers live. The foundation publishes booklets on Kargil heroes and distributes them free of cost in schools and colleges. It has also published a book in English and Marathi titled after a salute to our soldiers and distributed over 2,500 copies of the book in schools and villages. Mrs. Prabhudesai was honored by the Indo-Tibetan Border Police Commandment 2nd Brigadier Kulu. She was also awarded with the Prabhu Ram Smaran Puraskar. We are honored to welcome Mrs. Anuradha Prabhudesai to the 7th Bharatiya Chhatra Sansad. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत अभिनंदन करेंगे श्रीमती अनुराधा प्रभुदेसाई। Dear sons and daughters of India, do you have it in you? This is a slogan of the Indian Army. When the soldier of armed forces is asked the question, do you have the discipline, dedication, devotion, determination in you? The answer that he gives is resounding yes. Friends, our nation has one of the most respected armed forces in the world, who have won several victories unparalleled in military history. Yes, they have it in them. The question is, do we? A young officer of 22, when injured in action, is admitted in military hospital. I express my desire to meet him. He replies my cell phone, "Ma'am, I'm absolutely fine, don't worry. There is a small crack on my skull. My right hand is in plaster. There is a small injury on my stomach, and one of my leg is missing as it was blown off by mine led by our good friends. Ma'am, please don't worry. Please pray for my buddy as he has lost both his eyes. I will meet you soon, ma'am." Positive approach and a dangerous optimism. After a few months, the same young officer comes roaring on Royal Enfield, gives me a Kadak salute and whispers in my ears, "Ma'am, when people doubted my ability to walk, I decided to fly." And yes, he flew. Then Captain, now Colonel, he is presently serving the Indian Armed Forces and has bagged many awards in marathon, diving and paragliding competitions. This is but one of the many examples, my dear. Yes, they have it in them. The question that haunts me is, do we? Every infantry battalion has a Ghatak platoon, Ghatak, deadly, Ghatak platoon. They are the most motivated and physically fit soldiers in the battalion, जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं. Friends, 2020 is the era of youth. As youth, can you not resolve to be Ghatak platoon in your area of skills? You may be a doctor, engineer, scientist, lawyer, or a farmer, but be so intense in your focus that in the global perspective, other countries, while looking for talent, will have no option but to offer you the first position. And you know where the rest will end. वो चलेंगे हवा के साथ, हवा का रुख बदलोगे आप. For a million of years, our country has given birth to the thoughts which have influenced the world. India has always been a beacon of the hope for the entire world. My elders made me realize that the legacy of patriotism, brotherhood, and social awareness is not only to be treasured, but also passed on from one generation to the next. Boys and girls, we take fundamental rights to be guaranteed and granted under our Constitution as our birthright. But are we even aware of the ultimate sacrifices made by our young men and women at the altar of freedom so that we can enjoy the fundamental rights? Freedom is not free, my dear. Freedom is not free.
Everyday soldiers pay the price of guarding it with their lives. Yes, they have it in them. But the question is, do we? Boys and girls of India, in our armed forces, there is only one religion, nation, and one most powerful ism, which is Indianism. When we talk about repositioning India in a global perspective, let us start becoming Indians in the true sense and spirit. Divided as we are across lines of caste, creed, color, and religion, can we not take a leaf out of their lives? Being a soldier is a way of life. The qualities of courage, honor, dignity are not unique to the man in the uniform. All of us are soldiers without uniform. All that is needed is for us to recognize this truth and act upon it. Only then can we say, yes, we have it in us. Friends, what is that you think of when you think about sun, S-U-N, sun, Suraj? It is solar energy. When you think about a mother, it's compassion. When you think of the warrior monk, Yodha Sannyasi, it is none but Swami Vivekananda. These have become synonyms of each other's. Same way, the youth of India should be synonymous for inspiration, determination, patriotism, and most importantly, Indianism. This is very much possible, my dear, very much possible, because we have 3 years to reach our objectives. That is 36 months, 1,095 days, 26,280 hours, 50,76,800 minutes, and 9,46,08,000 seconds to transform ourselves. Captain Vikram Batra, Captain Vijayanta Thapar, Captain Anuj Nayyar, Major Padmapani Acharya, Captain Kenguru Se, and many others had just about 2,000 seconds to win the high altitude mountain peaks captured by the enemies in year 1999 before making the ultimate sacrifice. They did it. Their names are synonymous with valor, bravery, and courage. India is 7th largest country in the world and surrounded by as many as 5 friendly neighbors whose love for us is well known. It is Herculean task to safeguard our borders in this situation, and they do it. Yes, they have it in them. Friends, now is the time that we say, yes, we do have it in us. इस देश में गद्दारी का आलम कुछ इस कदर है यारो कि सरहद पर खड़ा जवान भी सोचता होगा कि हमला अंदर से है या बाहर से. सोचो, एक ही गलती हम बार बार करते रहे, धूलती चेहरे पे आईना साफ करते रहे. आज हमने हमारा चेहरा साफ किया है कि नहीं? And always remember, my dear young friends, sons and daughters of India, हौसले हो बुलंद तो पत्थर पिघलते हैं, पर्वतों के सीने से भी रास्ते निकलते हैं. When going gets tough, tough gets going. I'm sure you can do your best as youth of today and visionaries of tomorrow. You can, you will, you must. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी. बिल्कुल ये जज्बा हम में है और हम कर सकते हैं. आप मुझे बताइए, क्या हम कर सकते हैं? आवाज आई नहीं. क्या हम कर सकते हैं? थैंक यू. हमारे साथ तमाम यहाँ पर युवा छात्र नेता जो कि देश भर से आए हैं वो विराजमान हैं, और हमारे साथ कुछ और शख्सियतें भी यहाँ पर विराजमान हैं जो सुन रही हैं आज के सत्र में अलग अलग विचारों को. हमारे साथ तुषार गांधी जी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है BCS की गवर्निंग काउंसिल के. हम स्वागत अभिनंदन करते हैं आपका. हमारे बीच यहाँ जब्बार पटेल जी भी बैठे हैं जो कि जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक हैं और थिएटर पर्सनालिटी हैं. वो हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं. और पंडित गाडगिल जी भी हमारे साथ, प्रकांड पंडित, यहाँ पर विराजमान हैं. हम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं और अपनी युवा छात्र जो शक्ति है उसका भी अभिनंदन यहाँ पर मंच से करते हैं. और अगले वक्ता जिन्हें हम आवाज़ देंगे वो एक जाने माने एकेडमिशियंस के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं. उन्होंने 1971 में इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की
और 36 साल के अपने करियर में, अपने राजनयिक जीवन में उन्होंने तमाम देशों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर वो सुशोभित रहे और ब्राज़ील में भारत के राजदूत भी बने। प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ डिप्लोमेट श्री अमिताभ त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। उन पर आधारित ये छोटी सी फिल्म देख लें और फिर उन्हें आमंत्रित करते हैं आज के विषय पर अपने विचार रखने के लिए। Mr. Amitav Tripathi was born in a family of academicians in Kolkata on December 20, 1947. After doing history tripos at Trinity College, Cambridge, UK, he joined the Indian Foreign Service in 1971. In the course of a diplomatic career spanning over 36 years, Mr. Tripathi served in various capacities in Belgium, Pakistan, France, Nepal, Bangladesh, and the USA before being appointed as India's ambassador to Brazil in 2002. Mr. Tripathi's last assignment was as India's ambassador to Switzerland. During his 2 terms in the Ministry of External Affairs in Delhi, Mr. Tripathi handled the budget and finances of the ministry, including its external development assistance programs. In 1994-95, Mr. Tripathi did a year-long stint as Fellow of the Weatherhead Center for International Affairs at Harvard, Massachusetts. Post-retirement, Mr. Tripathi has been regularly giving talks at the Foreign Service Institute of Ministry of External Affairs. He has also been associated with the Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta. In addition, he is a founding member and trustee of India Foundation, a non-political charitable trust dedicated to providing medical services to the underprivileged, and an advisor to the Chennai-based NGO Hand in Hand. He is currently the president of the 289-strong Association of Indian Diplomats, whose members have all served as India's ambassadors abroad. We welcome Mr. Amitav Tripathi. तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री अमिताभ त्रिपाठी जी का। I'm very grateful to the organizers of Bharatiya Chhatra Sansad Foundation at Emmaus MIT School of Government for giving me this opportunity to address this wonderful audience. In the 36 years that I've served in the government of India and the 9 years that I've served as a mentor, I've never actually addressed a gathering as large as this. So thank you. The subject matter of today is extremely relevant. Repositioning India, a global perspective. You have heard a number of very inspirational speeches by people who spoke before me, and there are some very important speakers who would follow me. Therefore, I have a major competition. Let us get straight into the subject matter. Where does India stand in today's world? In landmass, we have the 7th largest country in the world. We also are positioned right bang in the middle of the Indian Ocean area. In fact, India is the only country in the world that has an entire ocean named after it. We are the 2nd largest population, over 1,300 million and growing. When after the 1998 Pokhran II test, Madeleine Albright, the Secretary of State of America, said, Indians are awful and nobody will talk to them, Inder Gujral said, we are 1/6 of humanity, 17% we can talk to one another. That is the strength of India. In another 10, 15 years at best, we shall be the most populous country in the world. We already are the 3rd largest GDP in purchasing power parity terms. We're also growing at the fastest rate in the world today. We have the 4th largest armed forces. We are a nuclear power, we are a space power, we are an IT power, we are a pharmaceutical power, so there are lots that are going in our favor. But that is not all. India is a mother civilization. Many of the mother civilizations of the world, like Sumeria, Egypt, Persia, are become only part of history. India is a living civilization. India's footprint goes way beyond its physical borders and covers a large part of the world. When our Prime Minister introduced through the United Nations
that yoga should become made international event. 192 member countries of the UN voted for it. There was not even a single country that voted against it. That is the kind of power that India wields today. We have created two major religions, and I, in a slightly facetious manner, say that one for our own domestic use, Hinduism, and one for export, Buddhism. Now look at the part of the world today where Buddhism is become the major religion and which binds these countries to us so intimately. We have 22 official languages, innumerable communities, castes, practices of cuisine or dresses or customs. Notwithstanding that, we have done well as a democracy, a rambunctious democracy, no doubt. We quarrel and fight among ourselves all the time. But in spite of that, our growth rate astonishes the world. Why? Why? Because first of all, we are democracy. Second of all, we are plural. Third of all, we are a youthful force. The median age of India today is 29, one of the lowest among the major economies of the world. Compared to that, China's is 37, others are even more. For much longer than any other major economies in the world, India will have a force to provide labor and provide demand. Globally, there are several major economies which are declining demographically. We do not have that kind of problem. We have generate demand, and if wherever there is demand, the economy is bound to grow. But we also have challenges. Many of our former speakers, while praising the achievements of India, very rightly address these issues. One of the biggest challenges India faces today, of course, is our adverse land-man ratio. We are 17% of humanity, but only 2.4% of the land is available to us. Degradation of land, water, and air is a very serious challenge that we face, and therefore we have to engage with other countries of the world to make sure that the environmental concerns and issues that we have are properly addressed. We also have over 25% of the world's absolute poor. In spite of 70 years, in fact, in a few days' time, we are going to celebrate the 67th Republic Day. It is a matter of great sadness that in spite of that, more than 25% of our people are part of the absolute poor, and many people are barely surviving. We are also pretty low in the Human Development Index. This is unacceptable. This is unacceptable for a country that has produced the likes of the head of Microsoft and Google and Pepsi-Cola and majority of the startups in the Silicon Valley. And we are one of the global leaders, whichever technology you can think of. We are the people who have sent the Mangalyaan. ISRO is capable of sending a rocket into space that can position 103 satellites into orbit. How can a country with this kind of enormous human resources still have so many poor people among us? This is very sad and unacceptable. Now, I belonged to the midnight generation. I was born in 1947. I and my generation are going to hand over the baton to people like you, the youth of India, the pride of India, and the envy of the world. You have to take the baton and run and make sure wherever there is a weakness, wherever there is a limitation in India, that is set right. Whether it is corruption, whether it is infrastructure, whether it is innovation, because our professor, the vice chancellor, very rightly pointed out, these are some of the absolute have to be done. These simply have to be done if India is going to reposition itself on the globe. We also have to look at the Indian Ocean, where we are critically positioned. We have to develop our blue economy along with the economy on the land. Our Sagarmala project, our Mosam project, all these are geared to re-establish our linkages with those countries with which we had important trade, commercial, cultural relations over the centuries. If you look at Southeast Asia, we call it the Look East policy. Our current Prime Minister calls it the Act East policy. You can see the enormous influence of India in this part of the world. And this area of the world is under threat, under challenge. Threat and challenge from the same country that threats and challenges across our northern border.
threats and challenges across our western border. This is our challenge that we have to deal with, and therefore it means that all the weaknesses, the domestic weaknesses that I've been speaking of, must be addressed first. It is only a united country, a united India, that can face up to the challenges of the world today. I shall briefly touch upon some of the global issues that are also of concern to us. This includes globalization, the weaknesses that are springing into it. Then there is the issue of the challenges of inequality, which I already addressed. We have to address that inequality address. And all kinds of threats. It's not just military threats from across the border which have not been resolved. It is also cross-border terrorism. It is also illegal migration. It is cyber security. These are many, many challenges that we face in India today. But, as I said, we have the strength and wherewithal to face them, overcome them, and take India to the next level and make India a truly great nation as it ought to be. I simply end with one quotation from Shakespeare. There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune. Omitted, all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves, or lack our ventures. So this is the challenge before us. We can take India to the next level, or we may fail. We should not fail. Failure is not an option. Jai Hind! Thank you very much, अमिताभ त्रिपाठी जी. आपने बिल्कुल ठीक कहा. चुनौतियां हमारे सामने बहुत हैं, लेकिन चुनौतियों से लड़ना और उनसे पार पाना, यही तो विशेषता और यही तो खासियत है हिंदुस्तान की. भारत की बहुत बहुत शुक्रिया. और अब हमारे बीच यहाँ मंच पर विराजमान हैं भारत में इराक के राजदूत हिज एक्सीलेंसी मिस्टर फाकरी H.L. ईसा. हम उन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो आए. वी इनवाइट हिज एक्सीलेंसी मिस्टर फाकरी H.L. ईसा. आपकी तालियों के बीच हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत में इराक के राजदूत हिज एक्सीलेंसी मिस्टर फाकरी H.L. ईसा. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Chairman, distinguished faculty members, guests, respected organizers, ladies and gentlemen. I'm delighted to be at this significant occasion and would like to express my sincere thanks for giving me this opportunity to deliver a speech focusing especially on the current situations in Iraq. A particular brand of Islam that's being taught in a foreign-funded seminaries in different parts of the world is responsible for the rise of Daesh or ISIS. Such a teaching automatically leads to produce Daesh sympathizers. This new brand of a school was divesting Islam of its humanitarian and tolerant traditions. Iraq is facing a fierce Takfiri attack from the terrorist militant groups who have caused havoc and destructions on the ground. In fact, their ideology transgresses every divine rule and all humanitarian values agreed upon the human being through all the ages. The terrorist militant groups came from around the world, from more than 100 states, and are supplied with the most sophisticated arms and equipment, supported regionally and internationally. They unfortunately managed, with the help of a handful of traitors, to enter into Iraq territory and were able to occupy a large area thereof, and almost succeeded in occupying Baghdad and overthrowing the democratic process in Iraq if it was not a call made from all religious marja'iyah, which is the leaders, for al-jihad al-kifai, which is the number are restricted according to the needs, which supported by all religious authorities of Muslims. On this occasion, I would like to clarify the Iraqi government stance in regard to counter-terrorism. One,
Iraq is fighting terrorism in order to defend for its territory, as well as to get a security and stability in all regions. Iraq has consequently suffered heavy losses of human resources and financial assets since 2003, as it has been fighting against all terrorist outfits, including Al-Qaeda, Daesh, and others. Second, the Iraqi security forces, especially the Popular Mobilization Forces, are national forces constituted by a resolution passed by the Ministerial Council and the Iraqi Parliament. It defends for Iraq under the Iraqi flagship, and whatever is being propagated against them on the basis of communal feeling or being claimed that they are beyond the country's framework, all these allegations are a kind of nervous attempts being propagated by the enemies of Iraq to abolish the democratic system. Three, the success achieved by the collective forces or collective efforts of the Iraqi armed forces and the joint forces of Peshmerga, which is the Kurdish fighters, Popular Mobilization Forces, and supported forces of the tribes led to recently reduce Daesh to 5% from 40% of in Iraqi territory in 2014, and to liberate most of the land occupied by Daesh. The fighting is now in their last stronghold in the city of Al-Mosul, whose over 90% of the city is already liberated, and we hope the Iraqi forces will liberate all the city very soon. I would like to affirm, on the request of the government of Iraq, to all countries and international organizations, particularly India, to kindly support Iraq in fighting terrorism, which is not threatening Iraq's entity only, but it is threatening the international peace and security. Iraq is seeking for, one, to support Iraq at a regional and international forum in all aspects, as well as to appreciate the sacrifice of the Iraqi citizen, Iraqi Popular Army, Iraqi mobilization forces, and tribal men who have been a great dedication against Daesh to counter terrorist outfits, and denounce the crime and condemn all activities of Daesh towards the unarmed and isolated citizen. Second, there should be international motion to support Iraq financially and logistically, considering that the fight which Iraq is facing with is to defend for all human and divine values, as well as for all people and region security, without any exception, as the terrorism has no boundary, has no ideology, has no nationality, and it is absolute evil being faced by humanity. Although Iraq is recently facing with the economic difficulties due to reduction of the international prices of oil to half, and due to the war therein, which has burdened the state budget, but Iraq is still determined to perform its duty towards its people who have been displaced from their region. Their numbers reach more than 3.6 million shelter seekers, according to the relief program, which includes construction camps, providing financial grants and establishment, donation boxes, paying salaries for the displaced employees and others. Third, the international effort to combat terrorism needs to fight ideology, ideologically, through making silent all the dissonant books, magazines, news channels, religious centers, which are trying to prescribe these armed forces as a jihadist recipe. This is the responsibility of the entire international community, and no state can claim that is far away from that impact of this fanatic ideology. Fourth, to drain the sources of terrorism, including its funding, training, and arming, is the responsibility of the international community as a whole, through a joint strategic operation with the Republic of Iraq to consolidate the stances at the international forum against this common enemy.
Iraq is on the forefront of struggle against fighting against Daesh, but the United Nations Security Council resolutions 2170 and 2199 recognize that Daesh is a global network and a global finance and a global recruitment. These transnational terrorists threaten every country in the Middle East and around the world, and therefore all countries in the region, and including India, have the binding commitment under Chapter 7 of the United Nations Security to do their part to defeat Daesh. Together we can build a secure and stable Iraq in the Middle East, where Daesh, ISIS, and terrorists have been defeated once for all and forever. Thank you very much. Once again, I would like to thank you all for giving me this opportunity. Thank you very much, Mr. Fakhri H. Al Issa. Thank you so much for your views. और हमारा सौभाग्य है कि एक और शख्सियत, एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसे राजनीतिज्ञ, एक राजनेता जो कि कानूनविद भी हैं और व्यापक विषयों पर अपनी राय रखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, हमारे बीच यहाँ मौजूद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एक्साइल डॉक्टर लोब्सांग सांगे जी मौजूद हैं। वो एक विषय पर अपने विचारों को रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनके जीवन और कार्यों पर एक नज़र डाल लें। Lobsang Sangay is a legal scholar and politician. He became Sikyong of the Tibetan government in exile on 8th August 2011. Sangay was born in a refugee community in Darjeeling in 1968. With a typical settlement background amidst fields, cows and chickens, fetching wood in the forest and helping his parents' small business, including selling winter sweaters. Graduating from the Tibetan school in Darjeeling, Sangay received his BA honours and LLB degrees from the University of Delhi in India. In 1995, he won a Fulbright scholarship to Harvard Law School, where he subsequently received his LLM degree the same year. In 2003, Sangay organized 5 conferences between Chinese and Tibetan scholars, including a meeting between the Dalai Lama and 35 Chinese scholars at Harvard University. In 2004, he became the first Tibetan among 6 million to earn a SJD degree from Harvard Law School and was a recipient of the 2004 Yong K. Kim 95 Prize of Excellence for his dissertation Democracy in Distress, Is Exile Polity a Remedy? A case study of Tibet's government in exile. In 2006, Sangay was selected as one of the 24 young leaders of Asia by the Asia Society. Sangay was a senior fellow at the East Asian Legal Studies program at Harvard Law School through 2011. He is an expert in Tibetan law and international human rights law. On 27 April 2011, Sangay was elected Kelon Tripa of the Tibetan government in exile. On 8 August 2011, Sangay took the oath of office, succeeding Lobsang Tenzin as Kelon Tripa. In a statement at the time, the Dalai Lama referred to Lobsang Sangay as Sikyong, and the title was officially changed from Kelon Tripa to Sikyong in September 2012. In his role as Sikyong, Sangay has emphasized the importance of seeking a peaceful, non-violent resolution of the Tibet issue. We are honored to welcome Mr. Lobsang Sangay. Reviving the soul of India, the Nalanda tradition, इस विषय पर अपने विचारों को रखेंगे डॉक्टर लोब्सांग सांगे। Hello, namaskar. I just want to thank Bharatiya Chhatra Sansad for inviting me here, especially Rahul and Vishwanath Tankaratji for hosting me here, and all the friends on the dais. I think I came here before and I touched on what Mahatma Gandhi ji said and what Vivekananda ji said. Today I'll be lending voice. I don't need to lend voice, but I'll be lending voice to what Buddha said and what Buddha has done for India and his greatness around the world. As the topic says, repositioning India, a global perspective. I think I've been hearing these speakers, and most of us tend to focus on 70 years since India attained its independence, or at most some cover up to 700 years of colonization of India. But I would like to go back all the way to 1st century to almost 13th century, when India was #1 in economy, #1 in civilization. India was #1 in the global power. So hence the title, repositioning India. I would say India should reclaim as the #1 power, #1 economy, #1 civilization in the whole world. Now what's happening around the world
in the globe. As you can see, there is a challenge to internationalism. There is challenge to liberalism, globalization, and democracy. In fact, there is a rise to extremism, nationalism, illiberalism, protectionism, and unilateralism around the world. After the First World War and Second World War, the paradigm of the international affairs shifted from nationalistic, illiberal system to a more peaceful, cohesive, integrated, and inclusive world. Hence, the League of Nations was established. Thereafter, United Nations was established, and the internationalism and liberalism flourished, especially after the collapse of Soviet Union, after the falling of the Berlin Wall. The democracy prevailed. Francis Fukuyama said, "End of history. Democracy has triumphed." But in recent years, as we can see, clearly, if you look at the success of internationalism, the classic case will be European Union. But with the Brexit voting in United Kingdom, when United Kingdom withdrew from the European Union, the most successful example of integration and inclusiveness, you can clearly see that there is a challenge to internationalism and rise to nationalism. And we know the Russian President Vladimir Putin is an example of nationalism. A recent election of Donald Trump is another example of Russian nationalism. And we can see with the election of President of Philippines, and so on and so forth. And in this day and age, what should the world do? How should we cope with the world? How should India cope with the world? Hence, for India to reclaim its position in the world, I suggest that it go back to the 1st century, to the 13th century, when the Indus Valley civilization was equally ancient and old, along with Egypt and Mesopotamia civilization. India's rich Buddhist tradition was the soft power that it influenced Asian geopolitics. Between the 1st and 16th century, India was the #1 in the World Wealth Index. As far as the economic historian Angus Madison is concerned, India was #1, and the world economy, a millennial perspective, India was the richest country in the world and had the world's largest economy until the 16th century. According to balance of economic power, India had the largest and most advanced economy. But then India lost its significance. As someone was saying, India is getting underestimated and underrepresented in the world. But if we claim that same spirit, the soul of India, the civilization of India for more than 1,000 years, then India could be #1 in the world. My point is that Buddhism, as someone just said, the greatest export to the whole world as far as India is concerned. In the 3rd century BC, Indian Emperor Ashoka greatly strengthened Buddhism and sent missionaries as far as Syria is concerned. If you look at all the neighboring countries, from Sri Lanka, Burma, Laos, Cambodia, Thailand, even until 13th century, even Indonesia, Korea, Japan, all were Buddhists. And then from India, it went to Central Asia, from Kashmir, Mongolia, Tibet, Bhutan, Sikkim, Nepal, all the way to Central Asia and Afghanistan. Again, it was
a Buddhist civilization. You can clearly see the Indian civilization influence extending all the way to Japan, extending all the Mongolia and China. So that was the respect of India. Even today, the international community see India as the place where Buddha attained enlightenment and Buddhism as strong and thriving religion. Some people still confuses and see Buddhism as not the core religion, but Buddhism is the sole, integral part of Indian civilization. At present, 98% of Buddhist Dharma followers live in Asia-Pacific region. 14 Asian countries are more than 50% Buddhist, and 7 of which have over 90% of their population practicing Buddhism. The Indian watchwords, Buddha, Dharma, and Sangha, or Three Ratna, the three jewels, still defines the underlying spiritual and moral foundations of Asian societies. In fact, the powerful Indian concept of Sangha not only intersects deeply with the social, political, and economic context of many Asian nations, but also anchors their national assertion. Buddhism can be a strong instrument of soft power for India at 2 levels: for the rising Asia in relation to the West, and for India in relation to Asia. However, is a sad irony is that even though the emperors such as Ashoka and Kanishka spread Buddhism all around the world, including in China, at present, as far as Buddhism is concerned, China has upper hand when it comes to soft power of Buddhism. China supports neighboring countries to renovate, repair, resurrect, even rebuild new Buddhist institutions in the neighboring countries. China garners support in favor of all these neighboring countries and hold major Buddhist international event. In that sense, China is a competition to India. Someone just said, Vivekananda said, 21st century will be century of India. But now many experts say 21st century will be a century of Asia. Whether it will be a century of India or China, it is to be seen. Even from geopolitical point of view, you can clearly see China's influence circling India's neighbor. The only Hindu country in the whole world, Nepal, has almost become a satellite state of China. You can clearly see China's relationship with Pakistan, whether tested friends, what they say. Yesterday, Prime Minister Modi ji at Rasaina conference said about Pakistan and expected, that's what he said, that he expects China to respect core issues of India, which includes geopolitics. But China's influence in Nepal, not just in Nepal, enormous pressure in Bhutan, in Mongolia, in Bangladesh, in Sri Lanka. Not only China has built a seaport in Pakistan, they have built a new seaport in Sri Lanka and building a city in Sri Lanka, and they're proposing one in Burma. You can clearly see the Chinese influence in all the neighboring countries of India is a reality. So India has to be careful. If he wants to be a number one, if he wants to revive as his position in the whole world, you must see the reality that is going on around neighbors and around Asia. Now, what can India do? Someone just mentioned India has more than 800 million youth below the age of 30, which makes it the largest and youngest demography in the world.
and in Asia. But you have the largest number of youth, but if they cannot be provided employment, then instead of becoming a factor that helps India, it might become a liability. So how can India grow economically? How can India be strong militarily? How can India be strong civilizationally? That will be the challenge in the coming years for India. But the greatest strength India has is its old ancient civilization of Buddhism. Hence, investing in soft power of India and Buddhism will lead India towards a global power. I think the Buddhist-based civilization will counter the current trend of the world. Instead of nationalism, the Buddhist-based internationalism will prevail. Instead of illiberalism, Buddhist-based liberalism will prevail. Instead of protectionism, I think Buddhist-based inclusiveness and integration will prevail in the whole world. Hence, if you want to revive India as number one, we should look past 70 years since the independence and 700 years since the occupation of India by foreign countries, but rather we should look back to 1st to 13th century when India was number one in all spheres of life, civilization, economy, and geopolitics. And I wish Vivekananda is right, that 21st century will be India's century, and that will be proven right by none other than Buddha himself. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Sange. Thank you very much for your views. तो आपने देखा भारतीय छात्र संसद के मंच से देश और विदेश और ऐसे वक्ता यहाँ पर पहुँचते हैं जिनको अमूमन हमको सुनने का मौका कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। और हमारी खुशकिस्मती है कि भारतीय छात्र संसद में तमाम ऐसे विशिष्ट वक्ता आते हैं हर साल, जो कि हमें ऐसी बातें बताते हैं जो शायद हमने अब से पहले सुनी भी ना हो। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल हमारे साथ बाबा रामदेव होंगे, हमारे साथ मानिक सरकार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। हमारे साथ जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा जी होंगे और भी तमाम विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुँचेंगे, अपनी बात कहेंगे, आपसे अपने विचारों को साझा करेंगे। तो आप उनको सुनने के लिए तैयार रहिए। और एक वादा भी हम हमेशा आपसे लेते हैं, ये वादा भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का वादा है। और लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारी भागीदारी हमारे चुनावों में रहेगी, मतदान के माध्यम से रहेगी। मतदान का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे डेमोक्रेसी में, और हम जानते हैं कि तमाम चुनाव कभी राज्यों के, कभी पंचायतों के और कभी देश के चुनाव देश में होते हैं, और लेकिन कई बार मतदान में रुचि नहीं दिखाते, और ख़ास तौर से वो लोग रुचि नहीं दिखाते जो पढ़ा लिखा वर्ग है। तो ये मतदान का एक बहुत बड़ा महत्व यहाँ पर भारतीय छात्र संसद के मंच से हम कोशिश करते हैं कि इन बातों पर भी हमारा ध्यान जाए, हमारी तवज्जो जाए। और एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाना चाहते हैं मतदान के इसी महत्व पर। आज बहुत खास दिन है, मौका है बड़ा काम करने का। उन दिनों भारी बर्फ पड़ रही थी और यहाँ ठंड में रास्ते बंद हो जाते थे, इसलिए हमारी बारी बाकी देश से 6 महीने पहले आई। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो खुशी, वो गर्व जो मैंने महसूस की।
बर्फ पड़े या बारिश, ये काम हर दफा मैं पूरा करता हूँ। आज भी उतना ही गर्व और उतनी खुशी होती है। मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण जो विषय है कि वोटिंग के बारे में हम अवगत होना क्यों जरूरी है, ये भी आप इसके ऊपर पहले जो छात्र संसद यहाँ पे हुए उसके ऊपर भी ये चर्चा हुई। ब्लैक मनी इलेक्शंस के ऊपर भी इस 7वीं भारतीय छात्र संसद में चर्चा होने जा रही है। बट सबसे महत्वपूर्ण बात, माय डियर स्टूडेंट लीडर्स ऑफ इंडिया, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें जब तक हम अच्छे राजनेताओं की बात करते हैं, हम अच्छे वोटर कब बनेंगे? जब तक हम अच्छे वोटर नहीं बनेंगे और वो अवेयरनेस नहीं आएगा तो हम अच्छे नेता बनाने की बात कैसे कर सकते हैं? अच्छे नेताओं से अच्छे नेताओं से आपको अगर शासन चाहिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अच्छा वोटर बनना हमने जरूरी, बहुत ही गुणी वोटर बनना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस अगर आप सब लोग जब तक नहीं करेंगे, मेरे जितने भी आए हुए छात्र संसद के जितने भी युवकों को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अवगत कराइए। इसका अवेयरनेस बहुत बड़ी संख्या में करना जरूरी है। जब तक अच्छा वोटर नहीं बनेगा और वोटिंग की एक वोट की कीमत हम नहीं समझेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता हम अच्छे नेताओं का अपेक्षा करना भारतीय छात्र संसद के इस प्लेटफॉर्म से भी सही होगा। तो मुझे लगता है वोटिंग इज अ बेसिस। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं कि प्लीज आप सीरियसली सोचें और वोटिंग के लिए बहुत बढ़िया काम आपके माध्यम से होना चाहिए। आप सब लोग एक एम्बेसडर की तरह इतने बड़े नंबर से आके कितना बड़ा भारत में आप स्प्रेड होके ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 120 करोड़ की आबादी में आप 7-8 हजार बच्चे यहाँ पे जो इकट्ठा हुए, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो सकता है आपके माध्यम से। इतना मैं अपील करता हूँ, प्लीज वर्क ऑन वोट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो भारतीय छात्र संसद के इस मंच से आप सभी से अपील कि मतदान जब भी हो तब उसमें जरूर जाएं और अपना कीमती वोट अदा करें। ये राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, इसे हमें निभाना चाहिए। और अब आगे बढ़ाते हैं भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर विराजमान हमारे साथ प्रकांड पंडित और राजनीति के जाने माने टीकाकार, विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, जो कि तमाम समाचार पत्रों में जिनके लेख हम पढ़ते हैं, जिन्हें टेलीविजन पर हम देखते हैं, विभिन्न भाषाओं के जानकार, हमारे बीच चेयरमैन काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की उपस्थिति, उनका सानिध्य हमें मिला है। हम उनके आभारी हैं और हमारा सौभाग्य है। आइए उनसे निवेदन करने से पहले हम उनके ऊपर देख लें ये छोटी सी वीडियो क्लिप। Sound, please. वेद प्रताप वैदिक जी अपने आप में एक सशक्त हस्ताक्षर और उनके बारे में हम सब जानते हैं। वेद प्रताप वैदिक जी का हम यहाँ स्वागत, अभिनंदन करेंगे। आज के विषय पर अपनी राय रखने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर वैदिक। मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ का हृदय से आभारी हूँ कि इस अपूर्व छात्र संगम में उन्हें मैंने आग्रहपूर्वक उपस्थित होने का मौका दिया। इंदौर शहर में आज से 55-60 साल पहले
मैं छात्र नेता था, 12 साल की उम्र में गिरफ्तार भी हुआ और पूरे जीवन में ऐसी सभाओं को भी संबोधित किया जिनकी उपस्थिति लाखों में थी। लेकिन आपसे सच कहता हूं कि छात्रों की इतनी बड़ी सभा मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। ये अपने आप में एक महान घटना है। अगर इतने छात्र किसी विचार से, किसी आदर्श से प्रेरित होकर कोई संकल्प कर ले तो भारत का नक्शा हम बदल सकते हैं। 21वीं सदी को हम भारत की, एशिया की सदी बनाकर छोड़ सकते हैं। यह अद्भुत समागम है। आज राहुल कराड़ जी से मैंने कहा कि आपने विषय अंग्रेजी में रखा है, रीपोजिशनिंग ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? भारत की पुनर्प्रतिष्ठा, यानी भारत महान फिर कैसे बने। इस भारत को हम महान भारत कैसे बनाएं, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो पहला प्रश्न तो यह है कि वो कौन सा भारत था जिसकी कल्पना, जिसका नक्शा हमारे दिमाग में है। तिब्बत के प्रधानमंत्री डॉक्टर सांगे ने अभी बताया कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। हमारे इतिहासकारों ने नहीं, पश्चिमी इतिहासकारों ने वो आंकड़े इकट्ठे किए हैं और बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार भारत का था। भारत की मलमल और भारत के खाद्यान्न जब जाते थे यूरोप की तरफ तो रोम के बाजारों में यूरोपियन स्त्रियां गर्मी के दिनों में भारत की मलमल का इंतजार किया करती थी। भारत के व्यापारी अपनी जूतियों में सोने, हीरे और मोती जड़ाया करते थे। भारत का व्यापार चीन से लेकर पूरे यूरोप तक। लेकिन विदेशी आक्रमणों की वजह से भारत में व्यापार भी घटा, भारत में समृद्धि भी घटी, भारत में अनुसंधान भी घटा। जिस देश में अनुसंधान घट जाता है, जिस देश में रिसर्च कम हो जाता है, वो देश आगे बढ़ना बंद हो जाता है। शिक्षा में अवरोध हुआ नहीं कि सभ्यता नष्ट हुई, साम्राज्य नष्ट हुआ, संपन्नता विपन्नता में बदल गई। उस भारत को महान कैसे बनाए? मैं अक्सर चीन जाता रहता हूं, वहां के विश्वविद्यालयों में भाषण होते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आप दक्षिणा क्या लेंगे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मुझे चीन के दर्शन कराओ। मैं देखना चाहता हूं कि चीन के सीने में भारत कहां कहां धड़क रहा है। और आपसे क्या बताऊं कि चीन के लगभग हर कोने में मैं गया हूं और हर कोने में मैंने भारत को धड़कता हुआ देखा है। उस समय चीनी भाषा का एक शब्द भी मैं नहीं जानता था जब पहली बार गया था। जब माओ त्से तुंग की जन्मभूमि पर गया मैं, तो गलियों में मैंने पूछा अपने अनुवादक से कि ये सड़क पर जो मूंगफली बेच रही है, इस महिला से मेरी बात कराओ। मैंने उससे पूछा कि तुमने भारत का नाम सुना है, इंडिया का नाम सुना है, हिंद का नाम सुना है? तो उसने कहा नहीं सुना है। तो मैंने अनुवादक से कहा कि अपनी भाषा में इस महिला से पूछो कि हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है। वो महिला बोलती है, आपका जो देश है ना, उसको हम कहते हैं भारत चीन के पश्चिम में है। भारत को बोलते हैं चीनी भाषा में पश्चिमी स्वर्ग, द वेस्टर्न हेवन।
मेरा सीना फूलकर 100 इंच का हो गया। अद्भुत। आगे गया एक बस्ती में, तो एक महिला सब्जी बेच रही थी। मैंने रुककर फिर अनुवादक से कहा कि यही सवाल इस महिला से पूछो। तो महिला बोलती है कि मैं बौद्ध हूं। डॉक्टर सांगे, वो बोलती है मैं बौद्ध हूं। चीनी महिला बोलती है मैं बौद्ध हूं। मैंने कहा तुम भारत को क्या बोलती हो? तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारे घरों में भारत का नाम क्या है? तो महिला कहती है, एक ने तो कहा पश्चिमी स्वर्ग। ये महिला बोलती है हम बोलते हैं भारत नहीं, हिंद नहीं, इंडिया नहीं, चीनी भाषा में बोलते हैं गुरुओं का देश। तब मुझे लगा कि भारत को हम जो जगत गुरु कहते थे, अपनी बड़ाई खुद नहीं करते थे, हमें दूसरे देशों के लोग जगत गुरु कहते थे। फाहियान इसीलिए आए भारत। कौन कौन नहीं आया भारत? इब्न बतूता आए मोरक्को से, फ्रांस से, बर्नियर आए, और उन्होंने जो भारत के बारे में वृतांत लिखे क्या गजब के हैं। सोने की चिड़िया था भारत। उस भारत को हम वापस कैसे लाएंगे? विज्ञान के क्षेत्र में भारत का कोई मुकाबला नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पश्चिम के डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर ये नहीं जानते थे कि मरीज को बेहोश कैसे किया जाए। 6-6, 8-8, 10-10 आदमी फौजियों को पकड़ते थे और चाकू छुरे से शल्य क्रिया, ऑपरेशन हो जाता था। और भारत में अब से 2000 साल पहले भी, इंडोनेशिया में देखिए जाके, भित्ति चित्र बने हुए, दीवानों पे चित्र बने हुए हैं कि भारत का वैद्य कपाल के द्वार को खोलता है, यूं करके कपाल खोलता है और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रोगी की शल्य चिकित्सा करता है। वहां कोई रोगी के हाथ पांव पकड़ने के लिए खड़ा नहीं। ये भारत का विज्ञान था। सबसे पहले मिसाइल किसने फेंका? ब्रिटेन ने फेंका, फ्रांस ने फेंका, अमेरिका ने फेंका। सबसे पहले मिसाइल मारने वाला भारत था। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल बनाया, और टीपू सुल्तान का जब मिसाइल दागा गया तो लंदन टाइम्स ने फ्रंट पेज पर 8 कॉलम के अंदर खबर छापी। उधर नेपोलियन ने पढ़ा उसको, यूरोप के अंदर जलजला आ गया। क्या रे, हिंदुस्तान में ये ताकत। आप संस्कृत का साहित्य पढ़िए, सबसे पहले तोप कहां बनी? संस्कृत में शब्द हैं सब, समर शास्त्र है, भुषुंडी, तोप के लिए भुषुंडी शब्द है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन सब तथ्यों का वर्णन किया है। मैं ज्यादा भूतकाल के बारे में आपसे नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो भारत जिससे फैला हुआ विचार, आर्यावर्त का विचार, ये जो 5 स्थान हैं, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये क्या हैं? ये हमारे देश हैं, ये आर्यावर्त है। अफगानिस्तान क्या है? ईरान क्या है? आर्यन का अपभ्रंश है ईरान। वहां के शहंशाह को क्या बोला जाता है? आर्य मेहर। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस का नाम क्या था? आरियाना। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटल का नाम क्या है? आरियाना। ये सब हमारे इलाके हैं। और बौद्ध धर्म चीन गया। चीन कौन ले गया? अफगानिस्तान के पठान ले गए। ये किर्गिजिस्तान होते हुए और जो सीमांत थे, जिंगकियांग है, इन सारे इलाकों से चीन गए। चीन, जापान, कोरिया, पूरा मध्य एशिया, आधा यूरोप। और संस्कृत का असर विश्वव्यापी। उस पर बोलूं तो 1 घंटा उसी पर बोलता रहूं। मैं भूतकाल को छोड़ता हूं। भारत महान था, महानतम था। उसके मुकाबले का दुनिया में कोई देश नहीं था। क्या किसी देश में एक साथ सिकंदर आए हों, चंगेज खान आए हों,
इतने हमलावर आए हो, बाबर आया हो। बाबर कहता था, 48 साल की उम्र में बाबर चला गया, 16 साल की उम्र में मिर्जा बना था, बादशाह बना था। बाबर कहता था कि मैं अगर मुल्क हिंदुस्तान पर, किश्वर हिंदुस्तान पर बादशाहत कर सका तो मानूंगा कि मैं सारी दुनिया का बादशाह हूं। हिंदुस्तान की हैसियत ये थी। उस हैसियत को कैसे कायम करना, इस पर मैं आखिरी में बोलूँगा। पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हम अपने देश को कितना ही कोसते हों, कितना ही इसके बारे में उल्टा सीधा हमको सुनना पड़ता हो, आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में इतने लोग कभी मतदान के लिए नहीं जाते जितने हिंदुस्तान में जाते हैं। करोड़ों लोग सड़कों पर, पानी बरस रहा हो, धूप में सड़कें जल रही हो, पता नहीं क्या क्या अत्याचार हो रहे हो, लोग मतदान की लाइनों में खड़े होते हैं, एक पर्ची उछालते हैं और बादशाहों से भी ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्रियों को सूखे पत्ते की तरह उड़ा देते हैं। बंदूक की गोली नहीं चलाते, तोप तलवार नहीं चलाते, छटाक भर खून भी नहीं बहाते, सिर्फ पर्ची फेंकते हैं। इंदिरा गांधी जैसी महाप्रतापी प्रधानमंत्री को सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया। ये लोकतंत्र की ताकत है। हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को देखो, हर देश का संविधान 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार बदल चुका है। और नेपाल में तो संविधान कई बार बना, बिगड़ा, आज तक मान्य नहीं हुआ। अफ्रीकी देशों को देखो, सब दूर संविधान बदल गए हैं। क्या गजब का देश है भारत कि एक संविधान हमारे नेताओं ने बनाया, वो आज तक जारी है। संशोधन होते हैं और मजबूत बनता जाता है, लेकिन संविधान नहीं बदला। हमारे सारे पड़ोसी देशों में करीब करीब तख्ता पलट हो चुका है। क्या भारत में तख्ता पलट हुआ? आज तक फौज के एक सेनापति की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत में किसी प्रधानमंत्री को उलट दे। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता जागरूक है। इस देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि यहाँ पर फौज का शासन हो। ये बड़ी अद्भुत बात है भारत के लिए। और जैसा कि हमारे राजदूत महोदय ने बताया कि भारत आज भी आईटी में बहुत आगे है। चीन में इसी तरह मैं आईबीएम की फैक्ट्री में घूम रहा था, तो आईबीएम के जनरल मैनेजर से मैंने कहा कि आपकी फैक्ट्रियां चीन की देख देख कर मैं दंग रह गया हूँ। तो बोलते हैं हम खोपड़ी में तेज हैं, लेकिन खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसमें आप लोग तेज हैं। हम लोग फैक्ट्रियां बना सकते हैं, कंप्यूटर बना सकते हैं, मशीनें बना सकते हैं, लेकिन मशीनों को चलाने की तरकीब जो इंडियंस के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि हमारे 30 लाख भारतीय, सिर्फ 30 लाख, 30 करोड़ अमेरिकियों में वो राज कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समृद्ध अगर कोई लोग हैं तो भारतीय हैं। सबसे अधिक शिक्षित लोग अमेरिका में कोई हैं तो वो भारतीय हैं। सबसे अधिक सुखी परिवार, ये याद रखिए, मैं अमेरिका में शिक्षित हुआ हूँ। आज से लगभग 50 साल पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तब वहाँ भारतीय देखने को भी नहीं मिलते थे। आज हमारे भारतीय परिवार सबसे अधिक सुखी और समृद्ध परिवार है। अमेरिकी लोग उनसे लाइफ स्टाइल सीखते हैं। 4-4 पीढ़ियाँ एक ही घर में रहती हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगल नहीं, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं। भारत की अद्भुत क्षमता है, लेकिन क्या ये भारत हमको मंजूर है? भारत की ये स्थिति से हम संतुष्ट हैं? नहीं है। भारत को पहले की तरह और पहले से भी ज़्यादा अब की तरह और अब से भी ज़्यादा आगे की तरह बड़ा मजबूत होना है, महाशक्ति बनना है। भारत को विश्व शक्ति बनना है। तो विश्व शक्ति वो कैसे बनेगा? विश्व शक्ति बनने के लिए सबसे पहला काम, मोर का नाच बंद हो। हमने पंख फैलाए, मैंने आपको पंख फैला के दिखा दिए कि भारत के पंख कितने सुंदर हैं, कितने मजबूत हैं, लेकिन भारत के पांव मोर के पांव की तरह दुबले हैं, कमज़ोर हैं, गंदे हैं। पहले हमको अपने पांवों पर ध्यान देना होगा।
सरकार कहती है कि भारत में 30 करोड़ लोग, सिर्फ 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं एकदम उलट बोलता हूँ कि भारत में सिर्फ 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, 30 होंगे या 35 होंगे, जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। भारत के 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। कैसे हैं? क्या उनको भोजन मिलता है? क्या उनको कपड़े मिलते हैं? क्या उनको स्वच्छ निवास मिलता है? क्या उनके बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा मिलती है? क्या उनके लिए मनोरंजन की व्यवस्था है? एक आदमी को जब तक 100 रुपया रोज न मिले, ये पांचों चीजें न्यूनतम भी नहीं मिल सकती है। भारत सरकार कहती है कि 32 रुपया शहर में और 28 रुपया गांव में मिले जिस आदमी को, वो गरीबी रेखा के ऊपर है। ये क्या मजाक है? तुम तो करोड़ों रुपया रोज खर्च कर रहे हो, लाखों रुपया रोज तुम पर खर्च हो रहा है। 28 रुपया और 32 रुपया में तुम लोगों को बुद्धू बनाना चाहते हो। आज 100 रुपया रोज से कम से कम 100 करोड़ लोगों को मिलता है इस देश के अंदर। वो सब गरीबी की रेखा के नीचे। जब तक उनका उन्नयन नहीं होगा, जब तक उनके लिए कोई समाधान नहीं निकलेगा, भारत एक मजबूत राष्ट्र नहीं बनेगा। उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए इस व्याख्यान में मैं नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए समय नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। इसी तरह से शिक्षा और चिकित्सा, बोलते हैं 73% लोग साक्षर हैं, लिटरेट हैं। लिटरेट होने का क्या मतलब? दस्तखत कर सकता है, अखबार का हेडिंग पढ़ सकता है, शीर्षक पढ़ सकता है, और उसको आता क्या है? सच्चाई तो ये है कि इस देश में 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोग शिक्षित ही नहीं हैं। जो बच्चे पाठशालाओं में भर्ती होते हैं, फेल होते जाते हैं निरंतर। बीए तक आते आते कुछ लाख 36 लाख बचते हैं। 22 करोड़ बच्चे बैठते हैं, सिर्फ 36 लाख बच्चे बीए तक पहुंचते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे? क्योंकि उन पे अंग्रेजी लाद रखी है। हिरण पर आप घास लादते हैं, जो गधों पे लादनी चाहिए वो हिरण पर लादते हैं। दुनिया का एक भी ताकतवर देश मैंने नहीं देखा है। मैं करीब 80-90 देशों में गया हूँ, एक भी ताकतवर देश मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ विदेशी भाषा के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई होती है। ना अमेरिका में होती है, ना ब्रिटेन में होती है, ना रूस में होती है, ना चीन में होती है, ना जापान में होती है, ना जर्मनी में होती है। ये भारत है कि विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होती है। इस विदेशी माध्यम ने इतना विनाश किया है भारत का कि जिसका कोई जवाब नहीं है। भारत की मौलिकता नष्ट हो गई है। भारत में मौलिक अनुसंधान नहीं होता है। पूरा देश नकलची बन गया है। हर चीज़ का अनुसंधान पहले विदेश में होता है, उसकी हम नकल करते हैं। अरे जैसे तोप बनाई थी टीपू सुल्तान ने, मिसाइल बनाए थे, जैसे भुषुंडी बनी थी, औषधियाँ हमारे यहाँ एक से एक चरक और सुश्रुत ने दी थी। हम क्यों नहीं करते ईजाद? इसलिए कि हम विदेशी भाषा में अपना सारा समय नष्ट करते हैं। जो समय हमको विदेशी भाषा थोपने में, सीखने में नष्ट होता है, वो विषय को सीखने में लगाएं तो आप सोचिए कि आज भारत का नक्शा क्या होता 70 साल में। लेकिन देश के नेताओं को समझ नहीं है, क्योंकि हमारे देश के नेता स्वयं अर्धशिक्षित हैं। अंग्रेजी का हवा उन पे सवार है। मेरा सौभाग्य है कि बचपन में ही मैंने जर्मन सीखी। जब पीएचडी करने लगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वहाँ का मैं पहला पीएचडी हूँ, याद रखिए। मैंने वहाँ फारसी सीखी, वहाँ मैंने रशियन सीखी। इन सारी विदेशी भाषाओं के साथ साथ संस्कृत बचपन से पढ़ी मैंने। तो मुझे आत्मविश्वास है अपनी भाषाओं पर। लेकिन जो अंग्रेजी की गुलामी करते करते बड़े हुए हैं, उनको आत्मविश्वास ही नहीं है, न अपनी भाषा पर है, न खुद पर है। अगर देश को हम आत्मविश्वास वाला देश बनाना चाहते हैं तो सारा शिक्षण स्वभाषाओं में होना चाहिए। देश मजबूत तब बनेगा जबकि अदालतें, सरकारी सारी संस्थाएं, हमारे अस्पताल सब स्वभाषाओं में काम करें। मैं सिर्फ हिंदी पे जोर नहीं दे रहा हूँ, अपनी भाषाओं में काम करें। मराठी में करें, बंगला में करें, तेलुगु में, तमिल में, पंजाबी में, उर्दू में, अपनी भाषाओं में काम करें। और सबकी जोड़ भाषा हिंदी हो। जो सपना महर्षि दयानंद ने देखा था, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जो सपना डॉक्टर लोहिया ने देखा था, और जिसके लिए मैं पिछले 50-55 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नया राष्ट्र भारत जो महाशक्ति के तौर पर उभरे, वो अपनी ताकत से उभरे, दूसरों की गुलामी करते हुए नहीं, दूसरों के आगे पूंछ हिलाते हुए नहीं। अगर ये हमने कर दिया, शिक्षा में क्रांति। मैं राहुल जी को कह रहा था कि तुम भाई अगर मैदान में आओगे तो क्या कर लोगे? मुख्यमंत्री बन जाओगे?
और प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हमारे संयोग से ही बन गए, धक्के में। प्रधानमंत्री बन जाओ, क्या कर लोगे? तुम परिस्थिति को बदलोगे सिर्फ, और परिस्थिति के बदलने से संसार नहीं बदलता है। परिस्थिति के बदलने का भी महत्व है, लेकिन उससे बड़ा महत्व है मनस्थिति के बदलने का। अगर मनस्थिति बदलोगे तो देश में क्रांति हो जाएगी। विचार की ताकत परमाणु बम से भी ज्यादा है। आप विचार बदल रहे हो राहुल जी, कराड़ साहब, इतने छात्र अगर संकल्प कर लें तो नक्शा देश का बदल सकता है। दूसरी चीज जो भारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है, विश्व में इसका ऊंचा स्थान बनाने के लिए जरूरी है, वो है चिकित्सा। आज अपने यहाँ दवाई का, चिकित्सा का क्या हाल है। आप गांवों में जाके देखिए, पैसों के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं, और बड़े बड़े अस्पताल बने हुए हैं, खूब लूटपाट चल रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग बल्कि पसंद करते हैं। आप में से, हम में से किसी आदमी के पास पैसे हों तो सरकारी अस्पताल में कभी जाएगा नहीं, वो हमेशा गैर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएगा, क्योंकि जीवन मरण का प्रश्न है। सारे अस्पतालों के अंदर ऐसी अव्यवस्था है। ये अनिवार्य होना चाहिए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी न्यायपालिका का, अदालत का आदमी हो, कोई भी पार्षद हो, विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, सबका अनिवार्य तौर पर इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। इनको गैर सरकारी अस्पतालों में जाने नहीं देना चाहिए। जाएं तो 3 आदमियों की अनुमति आवश्यक होना चाहिए। ये व्यवस्था करें, देखिए महीने भर में हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाएगी। अगर स्वास्थ्य मजबूत होगा तो यही नौजवान शेरों की तरह काम करेंगे। और अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, खान पान की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ये जवान किस काम आएंगे? ये बूढ़ों से भी कम ताकतवर होंगे। इन जवानों की जवानी को अगर बरकरार रखना है तो इनको अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का हमें पूरा इंतजाम करना चाहिए। 2-3 बातें और कह के मैं समाप्त करता हूँ। विषय के बहुत से पहलू हैं जिनको उठाना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ। एक, मेरे जीवन का बड़ा स्वप्न ये है जो प्रधानमंत्री लोग पूरे नहीं कर सकते। प्रधानमंत्रियों के बस की चीज नहीं है। वो स्वप्न क्या है? वही आर्यावर्त का पुराना स्वप्न। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इन सब में एकता कायम करना, इनका संघ कायम करना, महासंघ बनाना। जो महर्षि दयानंद की कल्पना थी, आर्यावर्त की स्थापना करना। डॉक्टर लोहिया जिसे कहा करते थे भारत पाक महासंघ बनाना। गुरु गोलवलकर जिसको अखंड भारत कहते थे, मैं उससे भी आगे जाता हूँ। अखंड भारत तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत को मिलाकर एक करना है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा इलाका हमारा इलाका है, हम इस पूरे इलाके के हैं। हम सबको एक परिवार की तरह रहना है। हम क्यों परस्पर विरोध करें? आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस इलाके में इतना पैसा है, इतना माल है, इतनी समृद्धि है कि 10 साल में हम यूरोप से आगे निकल सकते हैं। अकेले कजाकिस्तान में 2.25 करोड़ लोग रहते हैं और भारत से 3 गुना बड़ा है। उस देश में जब भी जाता हूँ मैं 500-500 किलोमीटर चला जाता हूँ, कोई आदमी नहीं दिखता है। इतना बड़ा देश, उसमें लोहा भरा हुआ है, तांबा भरा हुआ है, चांदी भरी हुई है, सोना भरा हुआ है। अफगानिस्तान गया मैं, हाजी गाक की खदान देखी। इतनी बड़ी खदान है लोहे की कि 200 साल तक हमारे सारे पड़ोसी देशों की लोहे की जितनी भी ज़रूरत है, अकेला हाजी गाक की खदान पूरा कर सकती है। लेकिन कोई उसका दोहन करने वाला नहीं है, कोई इन खनिजों को एक्सप्लोर करने वाला नहीं है, क्योंकि इस इलाके में कोई एकता नहीं है। अगर एकता हो जाए तो इतना माल है कि कोई भी आदमी इस पूरे इलाके का, भारत का ही नहीं, अगर ये 1.5-2 अरब लोग हैं सारे मिलके, एक भी आदमी गरीब नहीं रह सकता है, एक भी आदमी अशिक्षित नहीं रह सकता है, एक भी आदमी मोहताज नहीं रह सकता है। और धर्म, भाषा, भूषा, भोजन, भजन, ये सब कोई बाधा नहीं है। हम सब लोगों की सभ्यता और संस्कृति एक है। हम सब लोगों का वैश्विक नज़रिया, वर्ल्ड व्यू, हम सारे एशियाई लोगों का एक है। हम सब लोग मिले, और मैं तो तिब्बत को भी जोड़ता हूँ। जब ये सार्क बनाया मिसेस इंदिरा गांधी ने, तो मैंने इसका हिंदी नाम दिया था दक्षेश, दक्षिण एशियाई सहयोग संघ। उसमें मैंने तिब्बत को भी जोड़ा था। हम तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, उसके लिए हम बराबर लड़ाई लड़ते रहे हैं वैचारिक दृष्टि से। डॉक्टर सांगे आजकल उसके प्रधानमंत्री हैं। उसके पूर्व प्रधानमंत्री सोंदोरोंग रिम्पोचे मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं।
दलाई लामा जी का भी मैंने बहुत साथ दिया है। मैं कहता हूँ कि ये सारे इलाके ऐसे हैं जो भारत के प्रभाव क्षेत्र रहे हैं, इन सबको जोड़ना और एक करना आज बहुत बड़ा काम है। सरकारें नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्टर कराड़ जैसे लोग अगर संकल्प कर लें, ये बड़े संकल्पशील व्यक्ति हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है, मैंने तो भारत में और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देखी नहीं ऐसी। अद्भुत काम किया है। ये अगर संकल्प कर लें तो पूरे दक्षिण एशिया का महासंघ हम खड़ा कर देंगे। 2-3 बातें छोटी छोटी 1-1 मिनट में और ख़त्म करता हूँ। देश में शराबबंदी का आंदोलन चलना चाहिए। अभी आपने चंपारण की फिल्म देखी, सब चंपारण सत्याग्रह के 100 साल हुए तो चंपारण के लोगों ने मुझे बुला लिया, कहाँ गांधी जी और कहाँ मैं तो उनके पाँव की जूती भी नहीं, लेकिन मुझे याद किया, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। गया चंपारण में, जब लौट के आया तो नीतीश कुमार थे नहीं पटना में, मैंने फ़ोन किया तो कहीं और कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम छोड़ के आ गए। नीतीश को मैंने कहा कि नीतीश, तुम सारे देश में घूमो, शराबबंदी का प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मुझे किसी राजनीतिक समर्थन और विरोध का कोई परवाह नहीं है, मैं आपका साथ दूंगा। आज नीतीश की तरह हमारे शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। सारे मुख्यमंत्री लोग लगे हैं, प्रधानमंत्री इस पर आह्वान करें, शराबबंदी पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसी तरह से रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलना चाहिए। छात्रों में आज आपसे 2 प्रतिज्ञाएं कराना चाहता हूँ। देखो, शास्त्रों में कहा है अदक्षिणम यज्ञम विफलम। अगर पंडित को दक्षिणा नहीं दी कराड़ साहब तो यज्ञ विफल हो जाएगा। अगर पंडित को दक्षिणा नहीं दी तो यज्ञ हवन कराओगे, वो विफल हो जाएगा। मैं आज आपसे दक्षिणा मांगने आया और एक एक व्यक्ति से जिसने मुझे सुना है उसको दक्षिणा देना पड़ेगी। सबसे पहली दक्षिणा तो ये है, एक सवाल है आपसे, आप बताइए आप में से कितने लोग हैं जो बैंकों में और अपने कानूनी दस्तावेजों पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं? हाथ उठाइए। अंग्रेजी में दस्तखत करने वाले हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। देखिए, आप सब लोग अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। आप में से अंग्रेज तो बहुत कम है, 5-7 लोग बैठे हैं यहाँ, 10-5 लोग बैठे हैं। आप सब भारतीय हैं, तो भारतीय लोगों को किस भाषा में दस्तखत करने चाहिए? बोलिए, क्यों करने चाहिए? क्योंकि भाषा आपकी अस्मिता है, भाषा, दस्तखत आपकी पहचान है। आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? विंस्टन चर्चिल को क्यों नहीं कहते हैं? आप तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज क्यों कहते हैं? ब्रिटेन के यूनियन जैक को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो आपके राष्ट्रीय प्रतीक है। आपका दस्तखत आपका प्रतीक है, वो आप अंग्रेजी में कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। मैंने आज तक इतने विदेशों में गया हूँ, भारत में पता नहीं कितने लाखों दस्तावेजों पे दस्तखत किए होंगे, आज तक एक बार भी अंग्रेजी में मैंने दस्तखत नहीं किया है, हमेशा हिंदी में दस्तखत करता हूँ। आप किसी बैंक में जाइए, बैंक के बाबू से कहिए 100 रुपये दीजिए, वो जानता है कि आप कराड़ साहब हैं। आप 1 करोड़ रुपया भी चाहें, कराड़ साहब करोड़ रुपया भी चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कराड़ साहब को वो 100 रुपये नहीं देगा, कहेगा आपका चेक तो लाए नहीं आप। कराड़ साहब कहे ओ भूल गया। वो घर जाएंगे, चेक पे दस्तखत करेंगे और अपने चपरासी को दे देंगे। चपरासी जाएगा, बाबू देखेगा कि 1 लाख रुपया और देखेगा कि उस पर कराड़ साहब का दस्तखत है, फट से गिन के और गड्डी पकड़ा देगा। कराड़ साहब गए तो 100 रुपये नहीं, कराड़ साहब का दस्तखत गया तो 1 लाख रुपये। अब कराड़ साहब बढ़े कि उनका दस्तखत बढ़ा? आप बढ़े कि आपका दस्तखत बढ़ा? तो अपना दस्तखत आप लोग फिर हाथ उठाइए। कितने लोग कल जाके बैंकों में या परसों इस हफ्ते जाके अपने दस्तखत अपनी भाषा में कराएंगे? हाथ पूरे उठ नहीं रहे हैं। आप उठाइए, ये मेरी दक्षिणा है, ये मेरी भेंट है, ये मेरा तोहफा है, ये तोहफा मुझे दीजिए आप। ये शुरुआत है भारतीय भाषाओं के आंदोलन की। दूसरी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि देखिए, कानून से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। कानून भ्रष्टाचार पे थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकता है,
परिस्थिति बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, मनस्थिति बदलिए। आज तक हम लोगों ने, मेरे जैसे यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसने भ्रष्टाचार किया होगा, जिसने कभी कोई रिश्वत ली होगी, किसने कोई गलत काम किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना मन बड़ा मजबूत बना रखा है कि हम ना रिश्वत लेंगे ना हम रिश्वत देंगे। कोई ताकत हमको रिश्वत नहीं दे सकती, और कोई ताकत, कोई बड़े से बड़ा काम हम रिश्वत देके नहीं कराएंगे। मैं सोचता हूँ विद्यार्थियों, मेरे प्रिय छात्रों, भारत की भावी शान, भारत के भावी भविष्य, आप सब क्यों नहीं संकल्प करते हो कि हम कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाएं, हम कभी रिश्वत न लेंगे और न रिश्वत कभी देंगे। बोलो, हाथ उठाओ, कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं? कम लोग कर रहे हैं, कम लोग कर रहे हैं। वाह 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 वाह, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, इतने लोगों ने एक साथ प्रतिज्ञा की है। इस देश में ये सच्चा स्वच्छता अभियान है। आप सबको बहुत धन्यवाद, नमस्कार करता हूँ, फिर कभी मिलेंगे, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब खड़े होकर धन्यवाद अदा करेंगे। वेद प्रताप वैदिक जी के शब्द, उनके आशीर्वचन हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, और ये प्रण और प्रतिज्ञाएं हम लेते रहेंगे इसी प्रकार। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, जोरदार तालियों के साथ आभार प्रकट करते हैं आपका। Thank you very much. And now I'll quickly move forward to the question and answers of this particular session. मैं फिर से एक बार सभी स्टूडेंट लीडर्स को विनती करूंगा कि वो छोटा सवाल पूछें, और सभी अतिथियों को निवेदन करूंगा वो छोटा जवाब दें। छोटा सवाल, छोटा जवाब, so that I can take more number of questions. The first question is coming from podium number 3. Sir, you will see, आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा जो आपको सवाल पूछ रहे हैं। पोडियम क्रमांक 3 से मिस्टर अर्जुन from podium number 3. Yes, go ahead Arjun. हेलो, Go ahead. वैदिक जी, आपको प्रणाम करता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं। आपने 26/11 का जो मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसके साथ मुलाकात की थी। उसके ऊपर दावे और प्रतिदावे तो बहुत हो चुके हैं। छोटा सवाल जी, सवाल पूछिए। उस पर दावे और प्रतिदावे तो बहुत हो चुके हैं, आपसे उसके ऊपर कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा। आपने जो सवाल पूछा उसका विस्तार से जवाब 3 दिन तक हिंदुस्तान के और विदेशों के भी टीवी चैनल्स पर हाफिज सईद था या मैं था। खूब सवाल हुए और खूब जवाब दिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जीवन में पिछले 60-62 साल से मैं लिख रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, अध्यापन भी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी था। हाफिज सईद तो कुछ भी नहीं। ऐसे ऐसे लोग कि जिन्होंने फौजों को उल्टा दिया है, रूसी फौज को ख़त्म कर दिया। लाल डेंगा जो भारत के टुकड़े करना चाहता था। वेद प्रताप जी, हम और बहुत सवाल लेने हैं। मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ। हाफिज सईद तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे भारत विरोधियों से मैं मिला हूँ और अपने दावा नहीं करता हूँ, लेकिन उनका रूपांतरण हुआ है। हाफिज सईद पर भी ज़बरदस्त असर हुआ है। तो मेरे मिलने का मकसद सिर्फ एक होता है कि लोगों को गलत राह से हटाकर सही रास्ते पर लाना। Thank you very much. We'll quickly move on to the podium number 4, Sheikh from Pune, from podium number 4. Mr. Sheikh? Yes, sir. Yes, go ahead, please. Small question. मेरा सवाल मौलाना साहब से है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। My question is, recently Indian cricketer Mohammad Shami uploaded his picture with his wife wearing sleeveless top. On it, Islamic people talking about it is haram. Is it really haram to share personal life in Islam? मैं ऐसा सोच रहा था। वालेकुम अस्सलाम, पहले मैं तुम्हें जवाब दे दूं। वैसे आज का दिन हमारे मेहमानों का है, कल मैं आप लोगों के दरमियान बात करूंगा कि हिंदुस्तान हमारा चांद से आगे जा चुका है, तुम सूरज की बात करोगे। तुम आज भी उन्हीं कपड़े में उलझे हुए हो जो आधे हों या पूरे हों।
मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे कांधों को तुम्हारी माँओं की दुआएं मिल चुकी हैं। इन हाथों में जो कलम है उनको देश की उस मजबूती के लिए इस्तेमाल करो जिसके लिए अभी अभी वेद प्रकाश वैदिक जी ने बात कही है। Thank you very much. We'll quickly go to the podium number 2, Mr. Abhishek. Mr. Abhishek from podium number 2. Do we have him? Yes, go ahead, Abhishek. मेरा सवाल वेद प्रताप वैदिक जी से है। सर, ऐसा कहा जाता है कि मीडिया शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बट व्हाई डू पॉलिटिशियंस हैव स्टेक in various media houses? Is it hurting brand media? We got your question. A quick answer, please. मीडिया हाउसेस को पॉलिटिशियंस से इस तरह के संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अच्छा पत्रकार वही है जो निष्पक्ष हो, निर्भय हो और सिर्फ देश सेवा ही जिसके लिए सर्वोपरि हो। Thank you, sir. The next question comes to us from Twitter. The question is from Mr. Sanjay, and the question is for Honorable Lobsang Sangye ji. The question is, what efforts are you taking to create global pressure in favor of independent Tibet? By coming to Bharatiya Chhatra Sansad and creating awareness about the issue of Tibet in the context of occupation by China. And also I travel to various places, approach various parliaments and leaders around the world, and share with them the real situation of political repression of the Tibetan people, why basic freedom should be revived in Tibet. So traveling around the world, creating awareness, media coverage, and seeking support here in Delhi as well. Right. Thank you very much, sir. The next question comes again, this comes from Facebook, and it is for Honorable Ambassador, sir. The question is, what do you think about the relationship between India and Pakistan? Well, I guess we don't have any problem with the relation between India and Pakistan. But if you ask me about Iraq, it's fine. I have answered. That's, I guess, bilateral issue between the two countries. Whether we are against, no. We have a good relation with Pakistan. We have a very good relation also with India, trying to build a good relation with the both countries. I guess that's a question should be to somebody else, not to me. Okay, sir. Thank you very much on that. The next question comes from Gaurang from podium number 3. Mr. Gaurang from Gujarat. Yes, please go ahead, Gaurang. Small question, please. मेरा सवाल जगदेश कुमार जी से है। अभी फरवरी में अफजल की बरसी आ रही है। इस बार जेएनयू में क्या आयोजन है? Well, whatever happened on February 9th last year was an aberration, and that will not happen again. Thank you. And here comes the last question. It's again on Twitter from Bhopal. Mr. Saurabh Mishra from Bhopal is asking this question to Ved Pratap Vaidik ji. Sir, the question is, do you think global perspective has changed after 2014, that is Modi ji is becoming PM of India? Do you think global perspective towards India has changed? Yes, superficially it has changed. Thank you. I thank all the dignitaries for answering our question. Thank you very much. As I was telling you, my friends, and we have been discussing a lot about the different initiatives of Bharatiya Chhatra Sansad, and one of the most important initiatives of BCS is Youth to Youth Connect. And to share more important issues about Youth to Youth Connect, we have a very special person on this dais. But before I invite her onto the mic, I request Rahul Karaj sir to kindly felicitate the Director, Professor of Biology and Society, Professor Dr. Josk Bunders.
A big round of applause for Professor Dr. Jos Bunders, all the way from Amsterdam, FU University. A big round of applause, please. A bigger round of applause is expected, my friends. I now request Professor Dr. Jos Bunders to brief us about the Youth to Youth Connect activity. Dear students, after this wonderful day, full of inspiring speeches, we now immediately continue with Youth Connect. And Youth Connect is an excellent opportunity to meet, to discuss, to make new friends with students from other parts of India, students from other parts of the world. And I can assure you that the small discussions that you have in smaller groups together about democracy and what can be done, you will not forget in your whole life. So I hope you can all be there. I will be there, and I will see you in the groups. Thank you. Thank you very much. A big round of applause once again. I request everyone to remain seated because after the resolution, we are going to have our national anthem. I request everyone to maintain the decorum. And now we will have the voting on a very important resolution. I request my team to display the resolution. Repositioning India, a global perspective. We, the student leaders of the 7th Bharatiya Chhatra Sansad, hereby resolve to strive relentlessly to portray India as the greatest democratic country in the world, which has embraced the modern outlook while when continuing its deep-rooted ethos of Vasudhaiva Kutumbakam. हम 7वीं भारतीय छात्र संसद के समस्त छात्र नेता यह संकल्प करते हैं कि भारत को जिसने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाया है, विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सदैव कार्यशील रहेंगे. I request everyone to start voting. If you are with this particular resolution, I request you to kindly open your message boxes and type BCS4 space Y and send it to 9212148888. And if you don't support this particular resolution, I request you to type BCS4 space N and send it to 9212148888. All the dignitaries on the dais are also requested to vote, all the student leaders. A very, very important resolution. It's more of an oath that we all student leaders present here in the 7th Bharatiya Chhatra Sansad can take. We have almost a minute left. I request everyone to complete the voting process. Less than a minute left now. Few more seconds before we finish the voting lines. I request everyone to quickly type BCS4 space Y and send it to 9212148888 if you support this resolution. If you do not, then please type BCS4 space N and send it to 9212148888. Just last few seconds left. I request everyone to complete the process. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे. Last few seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and your time's up. This resolution passes with 97.98%. A big round of applause. Well, before I take your leave, I would just like to inform you that tomorrow is a very, very special day, and we are going to continue with the sessions. So tomorrow morning, when you all would walk in, you will receive your breakfast packages. Also, you will receive your lunch packets along with that. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. और लंच पैकेट और ब्रेकफास्ट की बात तो हो गई, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कल भी एक और ही बहुत सार्थक दिन, बहुत ही फ्रूटफुल दिन होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच हमारे विशिष्ट मेहमान बाबा रामदेव जी,
मानिक सरकार जी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे विशिष्ट मेहमान आपसे बात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। और आपको बता दें कि कल जो बहुत महत्वपूर्ण विषय जिन पर हम बात करेंगे, ब्लैक मनी एंड इलेक्शंस, हु विल बेल द कैट, इस पर बात होगी। काले धन पर, इलेक्शंस में जो चुनावों में काला धन इस्तेमाल होता है, इस पर बात होगी। इसके अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सेवियर्स और सैबटर्स, इस पर भी हम बात करेंगे। और जाने से पहले अपने मेहमानों का शुक्रिया भी करेंगे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप सब हमारे बीच हमारे सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू जी भी अपनी बात को कल रखने वाले हैं, ऐसा मुझे बताया गया। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आप सबसे अनुरोध करेंगे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जनगण मन के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसके साथ ही ये सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे। कल सुबह ठीक 9 बजे यहाँ उपस्थित होंगे सभी मेहमानों का एक बार फिर से, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। I request Ruchi Arora from Alwar, Rajasthan to kindly report backstage. I repeat, Ruchi Arora from Alwar, Rajasthan is requested to report backstage, please. Well, my friends, I hope you have enjoyed the sessions of the day. Tomorrow morning, we are going to start at the same time as we started today, 9 o'clock sharp in the morning. Every day, it's not good to make our guests wait. I request everyone to be on time, and please do not forget to drop the questionnaires that you have received into the designated drop boxes. I request everyone to drop the questionnaires that you have filled into the designated drop boxes only. Please do not throw them here and there. They are really important piece of paper for all of us. I request everyone to kindly drop the questionnaires into the drop boxes. Please do not litter around in the Pendal. As you all remember, we don't have any safari walas here in the Pendal. It is our collective responsibility to keep this venue clean and clear. I request everyone to maintain the same. Tomorrow morning, I request everyone to be here on time. Very, very important sessions you are going to witness tomorrow morning.